We are back again with LVCs for CA Inter FM. In our previous three sessions, we briefly understood the different concepts, different techniques under investment decision. Today, we would be starting with another important decision that financial manager has to take, and that is about dividend decision. Okay, so let's start. Let me just share my screen with you all. Okay, so under this chapter, first we will understand the meaning of this term dividend that you already know, you have already learned in your lower classes. But still again we will just learn in a very simple term. फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखा क्यों है, what is the learning objective behind keeping this chapter in your syllabus. ठीक है, so second we would be learning about learning objective, and third we will move further deep into this chapter. So students, dividend in simple terms is nothing but distribution of surplus. अगर कंपनी में सरप्लस बचता है, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन is nothing but dividend. Correct? Just for your general knowledge, the term dividend is coined from two terms. One is divide. Divide what? Divide surplus. Surplus that you generate at the year end. So term dividend is ideally coined from two terms, divide and end. Divide the surplus at the year end to the shareholders. This is how actually the phrase dividend is coined. So you already know it simply means it is nothing but distribution of surplus. ठीक है? Again, this chapter is about taking decisions related to dividend. यानी कि इस चैप्टर में एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ सीएफओ, आपका क्या काम क्या होगा? डिसीजन लेना है. यू आर इन मैनेजमेंट, you are a decision maker, you have to take decision related to which topic over here? Related to dividend. अब decision related to dividend मतलब क्या? So it means shall the company distribute the dividend or not? ये डिसीजन एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको लेना है. क्या कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं? शैल डिविडेंड बी distributed or not? ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है. यू हैव टू डिसाइड वेदर द कंपनी शुड पे डिविडेंड और नॉट. बोलो, मैं जस्ट ये क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो आपके दिमाग में एज अ डिसीजन मेकर, एज अ पॉलिसी मेकर क्या लग रहा है? कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं? यस और नो, या इट शुड बी डिपेंड? सर क्या आंसर होना चाहिए? यस, नो की सर इट डिपेंड्स? Yes, it should be, sir, it depends. Just a second. Okay, students, so we would be continuing the chapter, but before continuing the chapter, we have Shraddha ma'am with us. She would be initially conducting today's session and we will take ahead. Okay? Shraddha madam, you can take it forward. A very good evening, Dvip sir, and Yes, a good evening. very warm welcome to my dear students.
So many of you must be already knowing me, and I have an important announcement to make for the upcoming September 2026 examinations. As we all know that our exams are starting from 1st of September 2026. So we are conducting, the Board of Studies Academic is conducting the fortnight program, and it will be starting from tomorrow, that is 3rd of July 2026. So we have already conducted this program before also, specific to May 2026 and January 2026, and it has garnered immense benefit to the students. So again, we have come up with this program. It is with the name of Fortnight Program, which will help you to understand that where you are lacking. It's again an endeavor from the Board of Studies academic side to make you better at presentation of your answers and revise, strategize your studies. So I request you all to kindly log in to the this fortnight program, which will be an online session. No recorded lectures are available for this. It will be subject specific. We are starting with paper 1, that is advanced accounting, tomorrow. And with that, 3 to 5, our chairman sir will also be addressing you for this session. So kindly make the best of it. For this, you can just go on to the BOS Live and see the exact announcement and the schedule. So make the best of it, and I hope to see you all tomorrow there. Thank you. Thank you, sir, and please continue with the class. Yes, thank you, ma'am. And yes, to all the students, so ma'am has rightly said, please take benefit of this fortnight sessions. It will create some value addition in your life. So take the best out of it. Okay, so now let's continue with our dividend decision chapter. Let me just again share my screen. Okay, so here, as a financial manager, your task is to decide whether dividend दे कि ना दे, कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट डिसीजन. अच्छा, एंड इफ योर gut feeling, if the decision making is yes, let's say if you decide कि हाँ सर डिसीजन yes में आ रहा है, अंदर से बहुत इच्छा हो रही है डिविडेंड देने की, तो if yes, what should be the optimum payout ratio? This is what you have to decide again. ठीक है, फर्स्ट डिसीजन वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट. पहले तो वही डिसाइड करना है कि डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ सीएफओ. अच्छा, अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर द कंपनी. ठीक है, क्या 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना इज द बेस्ट? क्या 20% पे आउट करना इज द बेस्ट? क्या 30% इज द बेस्ट? 65% इज द बेस्ट? या 100% इज द बेस्ट? एनीथिंग, you have to decide this payout ratio as well. You have to decide the optimum, the best payout ratio for the company. Hey, I hope you understand the term optimum. Optimum means जहां पे maximum wealth of the shareholders create हो. This is the ultimate objective of financial management, to maximize the shareholders. जो भी डिसीजन लेते हो, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो डिसीजन लेने का अल्टीमेट मकसद क्या है? टू मैक्सिमाइज, टू क्रिएट मैक्सिमम वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स. जो ओनर्स है उसके लिए मैक्सिमम कमा के दे सके. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? Learning objective is like what should be the optimum payout ratio that company should give as a dividend. Is 0% the best diet for the company in the form of dividend distribution? Is 100% the best fit diet for the company for distribution of dividend? 20% is the best diet? ये decide करना है, ये नक्की करना है, ये तय करना है आपको in this chapter. ठीक है, okay.
Before deep diving into the other concepts of this chapter, let me ask you one question. एंड आप मुझे अपना आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या ओपिनियन है, वो चैट बॉक्स में बताना, ठीक है? सो देर इज टू कंपनी, लेट से वन इज द्वीप लिमिटेड एंड अदर इज व्योम लिमिटेड, ठीक है? दिस आर टू कंपनीज, द्वीप एंड व्योम लिमिटेड. अब द्वीप लिमिटेड ऐसी कंपनी है विच इज नॉट पेइंग डिविडेंड्स रेगुलरली, वो डिविडेंड दे ही नहीं रही है. But on the other hand, there is Vyom Limited, which regularly, every year, is paying good amount of dividend. बोलो, as an investor, rational investor, जिसको बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगा? द्वीप की व्योम? व्योम. Manasvi says Vyom. Yes, Gayatri Vyom, Amar Vyom. Okay. So everyone, each student had the same opinion, sir, Vyom. So can I say people will start buying shares of Vyom Limited? मतलब Vyom Limited के shares की demand बढ़ जाएगी. People will like to invest in Vyom Limited. So can I say if demand increases, price of the share of Vyom Limited ultimately will rise? A normal demand supply mechanism, demand supply power. Because Vyom Limited is paying regular dividends, उसके वजह से people are willing to invest in its shares. उसके वजह से indirectly price of share is going upwards. So in other words, according to you, can I say the dividend decision of the company is affecting its market price? A, dividend decision, कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है, उसके वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी. यस और नो? सो इन अदर वर्ड्स, कैन आई से डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी, कुछ भी होने दो, इट डज अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. यहाँ पे नो वन इज विलिंग टू इन्वेस्ट बिकॉज दे आर नॉट पेइंग रेगुलर डिविडेंड्स. आर यू फॉलोइंग? तो इसके प्राइस में can I say it will not increase? Dweep Limited का प्राइस will not increase. So can I say Vyom Limited का प्राइस में हलचल हो रही है ज्यादा? Why? Because it is paying regularly dividend and people are willing to invest in that company. Understood? Are you understanding from layman's perspective? So in other words, according to your opinion, dividend decisions of a company does affects its market price, ठीक है? Does affects its market price. So आपके हिसाब से यस सर, कंपनी का डिविडेंड डिसीजन, एक कंपनी डिविडेंड रेगुलरली दे रही थी तो पीपल आर विलिंग टू बाय, पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड उसके वजह से मार्केट प्राइस में मूवमेंट हो रही है. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज वन कंपनी, it can be anything. See, right now, Spurthi Rani, we are understanding from layman perspective so that the concept एकदम clearly fit हो जाए. So it can be anything. One, there might be कि द्वीप लिमिटेड डिविडेंड नहीं दे रहा है, मीन्स रिटेन कर रहा है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज डिविडेंड डिसीजंस ऑफ द कंपनी. कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, उस डिसीजन पे भी मार्केट प्राइस पे मूवमेंट होती है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है? सो डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ कंपनी डज अफेक्ट इट्स मार्केट प्राइस. तो जस्ट लाइक यू ऑल हैड द ओपिनियन, यस सर, कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही थी, रेगुलरली दे रही थी, तो उसका मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा था, चेंजेस हो रहा था, मूवमेंट हो रही थी मार्केट प्राइस में. सो लाइक यू ऑल सेड, यस, देयर आर फ्यू फाइनेंस स्कॉलर्स which have the same opinion like yours कि डिविडेंड मूवमेंट, डिविडेंड में आप हलचल करो तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द मार्केट प्राइस. बट देयर इज वन फाइनेंस स्कॉलर हु इज सेइंग कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, मार्केट प्राइस, द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल नॉट चेंज. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सो इस चैप्टर में हमें यस साइड की थियरीज पढ़नी है, नो साइड की थियरीज पढ़नी है। अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का कंटेंट क्या है वो समझा? इस चैप्टर का कंटेंट है यस वर्सेस नो। ठीक है। सो यस में कुछ फाइनेंस स्कॉलर्स है, वो लोग प्रूव कर रहे कि देखो डिविडेंड 10% से 50% हुआ तो प्राइस में हलचल हुई, 50% से 80% हुआ और हलचल हुई। नो साइड वाला एक फाइनेंस स्कॉलर क्या बोल रहा है, डिविडेंड 10% डिस्ट्रीब्यूट किया, 50% किया, 100% किया, 80% किया, dividend is sitting still. Sorry, market price wealth of the shareholders is sitting still. It is not having any halchal. It is not having any movement. Understood the content of this chapter? क्या सीखना है? Okay. तो yes side में there is Walter's model. There is Gordon's model. जिसका आपने थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा इनसाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा है अबाउट गॉर्डन्स मॉडल। यू वुड हैव लर्न द फॉर्मूला टू कैलकुलेट के यूजिंग गॉर्डन्स फॉर मॉडल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। ठीक है। एंड देयर इज वन मोर मॉडल विच इज आइडियली लेस इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, वी विल लर्न अबाउट दिस मॉडल एज वेल। सो ये जो यस साइड वाले फाइनेंस स्कॉलर्स है, उनका कंक्लूजन आपको पता चला, वो लोग क्या बोल रहे होंगे? दे आर ट्राइंग टू से अगर डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी चेंजेस तो मार्केट प्राइस में भी उस हिसाब से हलचल होगी। आर यू फॉलोइंग एवरीवन? एंड नो साइड में ऑलवेज ऑन द क्रिटिक साइड देयर इज वन फाइनेंस स्कॉलर कॉल्ड मॉडी गिलानी मिलर अप्रोच। You would have learned this in capital structure theory as well. Not learned this model, but इसका नाम सुना होगा आपने capital structure theory में, MM model. Even in that chapter, he was under the no side. ठीक है? Any changes in capital structure will affect in overall cost of capital. This is what MM was trying to say. So MM in FM is always on the critic side. Yes, arbitrage theory, correct. लेवर्ड फॉर्म ग्रेटर देन अनलेवर्ड फॉर्म ग्रेटर देन लेवर्ड फॉर्म, वो सब था एमएम मॉडल में। सो अगेन इवन इन दिस चैप्टर एमएम इज ऑन द क्रिटिक साइड। ही इज ट्राइंग टू से डिविडेंड डिसीजन कुछ भी होने दो, 10%, 20% पे आउट, 80% पे आउट, 100% पे आउट, 90% पे आउट, कुछ भी होने दो, बट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन इंटैक्ट। दिस इज वॉट एमएम इज ट्राइंग टू से। एंड यहाँ पे यस साइड वाले क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड डिसीजंस में हलचल हुई मींस मार्केट प्राइस में हलचल होगी, एंड इफ मार्केट प्राइस में हलचल होती है तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर चेंजेस। आर यू फॉलोइंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई इन अदर टर्म्स यस साइड थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल थियरी, और यू कैन कॉल इट एज रेलेवेंस थियरी। Means dividend decision is relevant for the wealth of the shareholders. Decisions related to dividends are relevant, are affecting the wealth of the shareholders. That's why it is termed as variable theory. यहाँ पे no side में MM approach है. Since wealth of the shareholders remain intact, whether you distribute dividend, whether you don't distribute dividend. So that's why this is also called as constant theory, or a better word, irrelevance theory. क्या बोलेंगे? irrelevance theory means dividend decision is irrelevant for the wealth of the shareholders. कंपनी डिविडेंड नहीं भी देती फिर भी the wealth is same. कंपनी डिविडेंड दे तो भी wealth is remaining same. Are you following everyone? Are you understanding the content of this chapter? इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है? Followed till here? Any doubts? Any concerns? Okay, let's move forward. So apart from learning yes models and no models, there are some practical approaches as well. Under this chapter, we would learn some practical approaches as well.
अब ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच मीन्स व्हाट प्रैक्टिकली कंपनी शुड गिव द डिविडेंड। ये सब मॉडल्स, ये सब थियरीज भूल जाओ। प्रैक्टिकली कंपनी को डिविडेंड कितना देना चाहिए बेस्ड ऑन इट्स करंट सिचुएशन, दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोचेस। ठीक है, सो इसमें वी विल फर्स्ट लर्न लिंटनर्स मॉडल and other is residual approach. Daksh, I already explained the start of this concept was the question that you have asked. So I cannot repeat again and go back to my what I have explained 20 minutes before. Residual value. Otherwise, I would not be able to complete the concepts of this chapter. So practical approaches where there is Lintner's model and residual value. So these approaches are different from yes side and no side. ठीक है? Now very important. ये जो yes side और no side वाले मॉडल है ना, they are trying to give you, trying to prove their theory by giving formula for market price, that is P0. कि अगर हम डिविडेंड 10% लेते हैं, अगर हम डिविडेंड पे आउट 10% लेते हैं, तो व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी? अगर हम डिविडेंड डिसीजन 10% पे आउट से 50% पे आउट करते हैं, देन व्हाट वुड बी द रिवाइज्ड प्राइस ऑफ द कंपनी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये यस साइड वाले एंड नो साइड वाले, they are trying to explain you, they are trying to give you the formula for market price based on dividend decision. Are you understanding? अगर dividend decision इतना होता है, let's say 10%, तो market price कितनी होगी? That they will calculate. अगर dividend decision 10% से 50% होता है, तो market price कितनी हो जाएगी? That they will calculate. Are you understanding? Even no side. MM is also trying to say that only if dividend is 0%, तो market price कितनी होगी? If dividend is 100%, तो market price कितनी होगी? That they are trying to explain you. Are you understanding, everyone? They are trying to explain you, in fact, the effect of dividend decision on market price. Are you following? Clear? But जो practical approach is है, what they are trying to say? दे आर ट्राइंग टू से कि ये प्राइस कितनी होगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को प्रैक्टिकली डिविडेंड कितना देना चाहिए, हाउ मच डिविडेंड कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट. हाउ मच कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड इन द कमिंग ईयर, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट. अब उसकी इफेक्ट मार्केट प्राइस पे हो रही है या नहीं हो रही है, दे आर लीस्ट कंसर्न. Are you following? So practical approaches are trying to say कि according to us, according to our model, कंपनी को practically dividend कितना देना चाहिए, that we will give you. But अब उससे मार्केट प्राइस में क्या अफेक्ट हो रहा है, मार्केट प्राइस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, we don't care. Clear everyone? So यहाँ पे फर्क है. So you should first get your कॉन्सेप्ट क्लियर कि जो यस नो वाले मॉडल्स है, दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन द मार्केट प्राइस. ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी होगी, दैट दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट. एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस आर ट्राइंग टू कैलकुलेट करंट ईयर में कंपनी को डिविडेंड कितना देना चाहिए. अब मार्केट प्राइस पे अफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट लिटरली केयर. ठीक है, so first you should understand between yes no models versus practical approaches. ठीक है, and इस चैप्टर में to understand this model in a better way, we have included a concept of valuation of a share. ठीक है, अगर वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल को अच्छे से ग्रास्प करना है, अच्छे से और बेटर वे में समझना है, then there is a concept of valuation of a share that also we have covered in this syllabus. ठीक है, so ये सब मैं क्या समझा रहा था अभी तक, ये टाइम पास नहीं कर रहा था. I was giving you the overview of the entire chapter. इस चैप्टर का कंटेंट क्या है,
हम इस 2 सेशन में क्या सीखने वाले हैं, दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल. ठीक है. सो प्लस वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ valuation of a share. How the share is valued theoretically. What is the theoretical market price of the share? That we will learn in this chapter. Clear? So आपको इस चैप्टर का कंटेंट, द ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्लियर हो गया? एनी डाउट्स, एनी कंसर्न स्टिल हियर? हाँ, डाउट्स मीन्स आप ऐसा ना बोलो सर हमें कुछ नहीं समझा, पूरा वापस समझाओ. सो दैट आई कैन नॉट डू राइट नाउ. ठीक है. Okay, now moving further. So I told you, if you want to understand Gordon's model, Walter's model in a better way, so first understand the concept of valuation of a share. ठीक है. सो पहले हम अलग से वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं, फिर अगेन वी विल कम बैक टू यस नो मॉडल एंड प्रैक्टिकल मॉडल. ठीक है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट valuation of a share. ये shares भूल जाओ, just focus on the word value. What do you understand by the term value? Value of anything. Forget about share. Value of car, value of office, value of bonds, value of shirt. What do you understand by the term value? Yes, please respond. How much worth? Yes, yes. Worth. Correct. वर्थ. परफेक्ट. और एवरी स्टूडेंट जिसने भी आंसर दिया है, यू आर करेक्ट. सो वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ अ शेयर ऑफ एनीथिंग. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर. सो वैल्यू मीन्स worth of a share. The process to calculate this worth, the process that we follow to find this worth is called valuation. Are you understanding? Process to find, to calculate the worth of share is called as valuation process. ठीक है. सो ये मैंने थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन दे दिया, थोड़ा बहुत तो आपको डाइजेस्ट भी हुआ, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट इन अ वेरी लेमैन टर्म्स. ठीक है. लेट्स से आई एम फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स वेयर. ठीक है. आई एम फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, सो मुझे स्पोर्ट्स वेयर पहनना अच्छा लगता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन आई एम हेडिंग वे बैक टुवर्ड्स माई होम, एंड वहां नीचे ही एडिडास का शोरूम है. ठीक है. सो इफ आई एम अ फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स वेयर, ऑब्वियसली मेरी नजर उस शोरूम पे जाएगी, एडिडास के शोरूम पे जाएगी. ठीक है. अब शोरूम पे कैन आई से बहुत सारे मैनिक्विन्स होंगे डिस्प्ले में. देयर वुड बी डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट स्पोर्ट्स वेयर. सो अगर मेरी नजर उस शोरूम पे पड़ती है, तो कैन आई से एज अ साइकोलॉजी तुरंत जो भी मैनिक्विन पे होगा ना डिस्प्ले, let's say I looked at mannequin and there was a good sportswear, so immediately my brain will calculate something and my brain will derive some price of the sportswear that is displayed on the mannequin. मैंने शोरूम पे देखा, मैनिक्विन पे एक बहुत ही अच्छा सा स्पोर्ट्सवेयर था. जैसे ही मैं उस स्पोर्ट्सवेयर पे देखता हूं, immediately my brain will start processing something. ब्रेन ऑटोमेटिक कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा एंड फटाक से ही विल से कि यार ये अच्छे एरिया में ये एडिडास का शोरूम है, कॉर्नर वाली शॉप है, तो ये शॉप का रेंट भी ज्यादा होगा. एडिडास इज अ गुड ब्रांड एज वेल. एंड जिस हिसाब से, जो हिसाब से क्वालिटी लग रही है, जो हिसाब से डिजाइन लग रही है, अकॉर्डिंग टू मी द प्राइस शुड बी ₹5,000 ऑफ दैट स्पोर्ट्स वेयर. ठीक है ना. ऐसे ये हम सबके साथ होता है, especially with the girls, with the females when they go for window shopping in the mall. ठीक है. सो ये जो 5,000 जो ब्रेन ने कैलकुलेट किया ना, दैट इज वर्थ ऑफ स्पोर्ट्स वेयर अकॉर्डिंग टू मी. दैट इज वैल्यू ऑफ दैट स्पोर्ट्स वेयर अकॉर्डिंग टू मी.
Are you understanding? Value means क्या? So that is worth of the sportswear according to me, हाँ. If you are not interested in sports, तो आपके लिए वो वर्थ कुछ भी नहीं है, आपके लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी. बट आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सो दैट इज वर्थी फॉर मी. अंडरस्टैंडिंग? सो ये 5,000 जो मेरे ब्रेन ने प्रोसेस किया फटाक से, उसने क्या किया? उसने वो स्पोर्ट्स वेयर की वैल्यू ढूंढी. आर यू फॉलोइंग? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वर्थ, दैट इज वैल्यू. अंडरस्टूड? अब मैं क्या करूंगा? इफ आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स वेयर, तो मैं उस दुकान में जाऊंगा. आई विल एंटर इन टू द शॉप. आई विल आस्क द शॉपकीपर कि सर ये जो मैनीक्विन में, ये जो डिस्प्ले में स्पोर्ट्स वेयर है, उसका कॉस्ट कितने का है? So can I say, he will now give the actual price of that sportswear कि सर इसका प्राइस 3,000 है. Hey, are you understanding? Are you following the story? So I entered into the shop. I asked the shopkeeper कि सर इसका प्राइस कितना है जो डिस्प्ले पे लगा है? So he said सर 3,000. So can I say now I will compare the worth with actual price? ये बोलो मेरे हिसाब से वर्थ वॉज 5,000. शॉपकीपर इज सेइंग सर 3,000 में मिल रहा है, अंडर प्राइस. बोलो मैं ये खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? विल आई बाय और नॉट? यस. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैल्यूएशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग वेदर टू बाय और नॉट. मैं ये वर्थ ही फाइंड ना करता तो मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं. Are you following? So are you understanding why we find the value of anything? To determine, to decide whether to buy that anything or not. In my present example, it was sportswear. Are you following? So भाई आपको कोई भी चीज खरीदनी हो, पहले उसका वर्थ तो कैलकुलेट करो. Are you understanding? And then decide whether to buy or not. So in our dividend decision chapter, we are not going to buy sportswear. What we are going to buy? Share. शेयर का एक्चुअल प्राइस आपको मार्केट में से पता चल जाएगा, बट पहले वो शेयर का वर्थ कितना है वो तो फाइंड करो. कैलकुलेट दैट फर्स्ट एंड देन डिसाइड वेदर इट इज अंडर प्राइस, ओवर प्राइस, खरीदना चाहिए कि नहीं. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, डिड यू गेट? Valuation is a process to find the worth of a share. Now, why do we follow this process? To decide ultimately whether to buy the share or not. Clear? So, valuation helps in decision making. Decision making about whether to buy share or not. ये जैसे शेयर है वैसे बॉन्ड भी हो सकता है, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Are you following? Let's say tomorrow you want to buy अंबानी का बिजनेस. ये पहले उसकी वर्थ कितनी है आपके हिसाब से वो तो कैलकुलेट करो. देन यू कैन डिसाइड ना, वरना वो तो बोल देगा 50,000 करोड़ दे दो. बट क्या ऐसे ही आप आंख बंद करके दे दोगे? फर्स्ट यू योर सेल्फ विल कैलकुलेट कि भाई 50,000 करोड़ की वर्थ एक्चुअल में है कि नहीं. फॉलोड? हाँ, द्वीप लिमिटेड होता तो ऑब्वियसली आप आंख बंद करके आपको देना चाहिए, बिकॉज इट इज माय कंपनी, यू शुड परचेस, आंख बंद करके. बट अंबानी अदानी के साथ ऐसा नहीं. ए दैट वाज अ लाइटर जोक, ऐसा फैक्ट मत समझो, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट. Yes, valuation is derived from valuation. Value is derived from valuation and market prices are different. Yes, market prices are the actual price based on the demand supply. Clear? अच्छा, मान लो इस केस में फॉर मी द वर्थ ऑफ दैट स्पोर्ट्सवेयर वाज 5,000, बट शॉपकीपर को पूछता हूं तो ही सेइंग सर ये 13,000 में मिलेगा. तो इज इट अंडर प्राइस की ओवर प्राइस्ड? इट इज ओवर प्राइस. ठीक है, एक्चुअल प्राइस इज ओवर द वैल्यू, सो आई विल नॉट बाय. ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? सो कैन आई से वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ अ शेयर, in a very simple language, it means what investor is max ready to pay. ठीक है, इन्वेस्टर इन दिस केस, इन माई एग्जाम्पल, आई एम मैक्स रेडी टू पे 5,000. उसके ऊपर अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, आई विल नॉट बाय, आई विल कम आउट ऑफ द शॉप एंड आई विल चुपचाप मैं घर की तरफ बढ़ जाऊंगा. अंडरस्टूड?
सो वैल्यू करने का मकसद क्लियर हुआ. हम वैल्यू करते क्यों है, शेयर की वैल्यू फाइंड क्यों करते हैं. द रीजन इज अल्टीमेटली टू डिसाइड कि वो शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं. अभी तक जब हमने ये कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ा हो तो हम क्या करते हैं, दो तीन जन ने टिप्स दे दी कि ये शेयर खरीदो तो हम खरीद लेते हैं. बट आर वी रियली कैलकुलेटिंग द वर्थ ऑफ दैट शेयर. उसकी वर्थ क्या एक्चुअल प्राइस के जितनी है कि नहीं, वो तो चेक करो. वो आप कब चेक करोगे, अब आज के बाद जब आपने ये एफएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नाउ यू विल चेक कि भाई एक्चुअल में ये वर्दी है कि नहीं टू परचेज और नॉट. बाकी तो चार जन ने बोल दिया, टिप दे दी, ये खरीद लो, अच्छा ऊपर जाने वाले, वी जस्ट परचेज, एंड 90% ऑफ इन्वेस्टर्स सफर्स लॉस बिकॉज ऑफ सच टिप्स. क्लियर एवरीवन. So you should not blindly follow the tip. In fact, I always suggest to all my students, you right now focus on study. इजी मनी में, फास्ट मनी में अभी ये लालच, ये ग्रीड में आप मत जाओ. डोंट बी ग्रीडी. फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, हाउ टेक्निकली इट शुड वर्क. अंडरस्टैंड दैट एंड देन इफ यू वांट यू कैन डिसाइड. बट ऐसे ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए. क्लियर एवरीवन. दिस इज जस्ट अ फ्रेंडली टिप टू यू ऑल सो दैट आपका लॉस ना हो आगे जाके. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ शेयर. ये हमने वैल्यू ऑफ अ शेयर का मतलब तो समझ लिया, बट वैल्यू ढूंढने कैसे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. अंडरस्टूड. सो वैल्यूएशन, टू फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, एनीथिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, there are n number of valuation models that are accepted, ठीक है, in this world. Are you following? हमने वैल्यू, इसका मीनिंग समझा, बट अब ढूंढे कैसे वो तो सीखना पड़ेगा. सो देर आर n नंबर ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स, टूल्स, methods available in financial management. You can pick any of the model. You can just substitute the values and get and find value of a share. ठीक है. और ये डिटेल में सी एट सीए फाइनल लेवल, वैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है. देयर यू विल लर्न different valuation models to value a share, to value bonds, to value entire business as well. Are you following? वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, बट इन दिस चैप्टर हमें रेलेवेंस है डिविडेंड डिसीजन के साथ. ठीक है. सो वी विल लर्न ओनली दैट मॉडल विच इज रेलेवेंट फॉर अस इन दिस चैप्टर एट सीए इंटर लेवल. ठीक है. सारे वैल्यूएशन मॉडल यू विल कवर एट सीए फाइनल लेवल, बट हियर ओनली दैट मॉडल which is related to dividend, we will take that and learn that. But again, I am repeating, to value share, debentures, bonds, preference shares, government securities, or any financial instrument, there are numerous models available and accepted. In fact, एक स्टेप आगे का बताऊं, आप खुद अपना मॉडल भी बना सकते हो. You yourself can create a valuation model. कैसे सर, हम खुद से कैसे बना सकते हैं? सो लेट्स से आई एम प्लानिंग टू बाय अ कंपनी. ठीक है, मुझे एक पूरा कंपनी को टेक ओवर करना है. ये टेक ओवर करने के लिए मुझे परचेज कंसिडरेशन तो चुकाना पड़ेगा. ठीक है. सो आई थ्रू सम टेक्निक्स, थ्रू सम मॉडल, और मेरे हिसाब से मैंने परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया. एंड ये परचेज कंसिडरेशन मैंने जो डिसाइड किया, आई प्लेस्ड बिफोर द ऑपोजिट पार्टी. जो कंपनी को मुझे खरीदना है, जिस कंपनी को आई विल बी टेकिंग ओवर, उस कंपनी के मालिक को मैंने ये पूरा मॉडल समझाया. ही गॉट फ्लैटन्ड. हाँ सर, अच्छा है, परचेज कंसिडरेशन अग्रीड. सो कैन आई से दिस इज माय पर्सनल मॉडल विच गॉट एक्सेप्टेड इन द मार्केट. सो इवन यू योरसेल्फ कैन क्रिएट वैल्यूएशन मॉडल. एफएम इज दैट प्रैक्टिकल. एफएम में कोई स्टैंडर्ड रूल्स, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स, इंडियस ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना है. इट इज वेरी प्रैक्टिकल. यू योर सेल्फ कैन क्रिएट फॉर्मूलाज. हाँ, यू हैव टू जस्टिफाई टू द ऑपोजिट, टू द काउंटर पार्टी. ठीक है. वो अगर एक्सेप्ट कर लेते आपका परचेज कंसिडरेशन, देन दैट इज योर वैल्यूएशन मॉडल एक्सेप्टेड. अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ लेट्स कम बैक अगेन टू द वैल्यूएशन मॉडल that is relevant in this chapter, and the name of that model is dividend discount model.
इसके अलावा देर इज फ्री कैश फ्लो मॉडल, यू विल लर्न एट सीए फाइनल लेवल. मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉडल, you will again learn at CA final level. Free cash flow to equity model again at final level. But here the relevant model for us is dividend discount model. बोलो या dividend discount technique बोलो. ठीक है. Now a very important fundamental of valuation. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, that is the base foundation of valuation concept. Value of equity is nothing but present value of all future cash inflows discounted at KE. This is how you find value of equity shares. उस इक्विटी शेयर से फ्यूचर में क्या क्या इनफ्लो होने वाला है, तो कैन आई से इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. इक्विटी शेयर से हमें डिविडेंड्स मिलेगा. सो डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स एट केई. व्हाई? बिकॉज वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी. उसके लिए हम केई लेंगे, बिकॉज यू नो केई इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. आर यू फॉलोइंग एवरीवन? अच्छा, अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करना होता, bond is a just like debentures, it is a borrowed fund, so it will be present value of all future cash inflows in the form of interest. Can I say bonds में अगर we invest in bonds तो future cash inflows can I say हमें interest के रूप में generate होता, and we would have discount that interest at KD, cost of debt. Are you following everyone? अच्छा, अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता, इफ यू वांट टू वैल्यू अ प्रेफरेंस शेयर्स, then discount all future preference dividends at KP. Understood everyone? Because KP is the expectation, is the desired rate of preference shareholders. But here in this chapter, वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स. ठीक है. सो इक्विटी से फ्यूचर में इक्विटी डिविडेंड मिलेगा, उस सब डिविडेंड्स को आप डिस्काउंट करो एट KE, and the value that you get is called as value of equity. This is the core foundation of valuation principle. ठीक है. मान लो वैल्यू ऑफ बिजनेस करना होता, वैल्यू ऑफ बिजनेस, आपको कोई बिजनेस खरीदना है, तो यू विल वैल्यू दैट बिजनेस. ठीक है. सो उस बिजनेस से फ्यूचर में कैश इनफ्लोज, कैन आई से इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस होगा. सो यू डिस्काउंट ऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एट WACC, बिकॉज आप पूरा बिजनेस खरीद रहे हो. पूरा बिजनेस मीन्स उसमें डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी सब आ गए. ठीक है. सो इन दैट केस आर डिस्काउंटिंग रेट वुड बी WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी. क्लियर? सो फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन इज find the present value of all future cash inflows. एंड प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटिंग रेट लगेगा. ठीक है. डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लगेगा? इट विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू आर वैल्यूइंग. इक्विटी है तो डिस्काउंटिंग रेट वुड बी KE. प्रेफरेंस है, डिस्काउंटिंग रेट वुड बी KP. बॉन्ड्स डिबेंचर्स है, डिस्काउंटिंग रेट वुड बी KD. बिजनेस है, डिस्काउंटिंग रेट वुड बी WACC. अंडरस्टूड? सो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट दैट यू वांट टू वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट चेंजेस. क्लियर? बट फंडामेंटल यही है, उस इंस्ट्रूमेंट से फ्यूचर में जो भी कैश इनफ्लो होने वाला है उसको आप डिस्काउंट करो. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द कोर फंडामेंटल ऑफ वैल्यूएशन. ये फाइनल में अगेन एंड अगेन इन एवरी चैप्टर दिस विल गेट रिपीटेड. ठीक है. सो यू जस्ट क्लियर द बेस, योर फाउंडेशन शुड बी क्लियर. Okay, so in other words, can I say value of equity is nothing but discounting the dividend that I get in year 1 plus discounting the dividend that I get in year 2 plus discounting the dividend that I get in year 3 plus discounting the dividend that I get in year 4, and this channel runs till infinity. Are you understanding? अच्छा, डिस्काउंट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं,
So 1 plus r raised to n, but here r is nothing but your ke. ठीक है? So d1 upon 1 plus ke raised to 1, discounting of year 1 dividend. फिर d2 upon 1 plus ke raised to 2. This is nothing but discounting, finding the present value of year 2 dividend. Likewise, year 3 dividend को डिस्काउंट करेंगे. Likewise, year 4 dividend को डिस्काउंट करेंगे. And likewise, till infinity, we will discount the dividends. Understood the logic of valuation? Valuation of anything, valuation of shares says आपको शेयर्स का वर्थ ढूंढना है. रुको, पहले उस शेयर से फ्यूचर में जो भी इनफ्लो होने वाले उसको डिस्काउंट करो. उस सबका टोटल इज योर वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है? क्लियर एवरीवन? टिल ईयर क्लियर? इफ नॉट तो आगे का शायद आपको ना समझे. I hope you understood the core principle of valuation. It is nothing but discounting of all future cash inflows at the respective discounting rate. ठीक है? Now. So till here the foundation is clear. Future cash inflows को आप सिर्फ डिस्काउंट करते जाओ, उसकी प्रेजेंट वो सबका टोटल इज माय वैल्यू ऑफ शेयर टुडे. ठीक है? So ये सबका टोटल इज माय P0. क्लियर? वैल्यू और वर्थ ऑफ शेयर टुडे. फिर ये जो वर्थ मिला आई विल कंपेयर विद एक्चुअल प्राइस एंड आई विल डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट. क्लियर टिल हियर? नाउ if it is clear till here, now comes second part of this movie. Second part is कि ये sir ये what how to guess this dividends. ये dividends क्या हो सकते हैं? So the guesswork of dividend will give arise to 3 sub models of dividend discount model. ये dividend someone would say कि sir dividend जो पिछले साल दिया होगा वही आगे कंटिन्यू होगा. Someone would say हाँ पिछले साल जो डिविडेंड दिया वो तो कंटिन्यू होगा, बट उसमें कुछ ग्रोथ भी हो सकता है. कुछ लोग बोलेंगे पिछले साल जो डिविडेंड दिया है वही डिविडेंड थोड़ी होगा इस साल. कुछ भी हो सकता है ना. डिविडेंड कैन बी एनी अमाउंट. सो हाउ टू डिटरमाइन दिस डीज that we will learn in our next part. Understood? Best guess on the dividends. Dividends future में क्या क्या हो सकते हैं? What are the likely possibilities of future dividends? That we will learn now. ठीक है? So the likely possibilities of future dividends. Likely possibilities of future dividends results into or arises into further 3 sub models. One is first guesswork is sir जो पिछले साल डिविडेंड दिया है वही लेट्स अज्यूम फ्यूचर में भी वही डिविडेंड रहेगा. ठीक है? सो कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल. So sub model 1 is constant dividend model. This model is under the main branch of dividend discount technique. हम main branch को भूलना नहीं है. Dividend discount model is the main branch. उसमें one first best guess work is assuming जो पिछले आगे dividend दिया होगा वही future में continue होगा. Second is dividend will grow but at a constant rate. So that is constant growth model. Every year dividend will grow. Let's say last year dividend paid was 10 and let's assume our growth rate in the company is 10%. तो इस साल 10 plus 10% यानी 11 रुपया होगा. नेक्स्ट ईयर 11 plus 10% 12.21 होगा. फिर थर्ड ईयर 12.21 plus 10% 13.31 समथिंग होगा. Are you understanding? So dividends are growing every year, but at 10%, 10%, 10%, 10% till infinite life. ठीक है? So dividends will grow, but the growth rate remains constant. First case में क्या था? Dividend is not growing at all. Growth was 0. Dividend was हाँ decrease भी हो सकता है. That is scenario 3. Variable growth model. Variable plus constant model.
थर्ड इज वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। मींस कुछ साल इनिशियली ऊपर नीचे होगा, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम इट विल बी स्टेबल टिल इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, सो कुछ साल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट आफ्टर 5-6 years इट विल ग्रो एट अ स्टेबल रेट। दैट इज गेस वर्क 3। ठीक है, so likely possibilities of dividend gives rises to three guesswork. One is assuming कि जो लास्ट डिविडेंड कंपनी ने दिया था वही आगे लाइफ टाइम तक, जब तक है जान तब तक कंटिन्यू रहेगा। दूसरा लाइकली पॉसिबिलिटी, दूसरा बेस्ट गेस वर्क इज, नहीं सर यार, लाइफ टाइम तक कांस्टेंट थोड़ी अज्यूम कर सकते, इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, लाइफ में कुछ ग्रोथ तो चाहिए। इवन इन आवर पर्सनल लाइफ वी वांट सम ग्रोथ, सो डिविडेंड में भी कुछ ग्रोथ होना चाहिए इफ वी स्टे इन्वेस्टेड विद दैट कंपनी। ठीक है, सो सेकंड बेस्ट गेस वर्क सेज दैट ठीक है डिविडेंड को ग्रो करो बट एट अ कांस्टेंट रेट टिल इनफाइनाइट लाइफ। फॉलोड। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं सर, ऐसा कांस्टेंट ग्रोथ रेट कैसे अज्यूम करें। सो इनिशियली पहले 5-6 साल या 7 साल, द फ्यूचर दैट यू कैन सी, इनिशियली आपको जो लग रहा है कि ईयर 1 में 10% ग्रोथ होगा तो टेक 10%, ईयर 2 में 50% होगा, टेक 50% इन ईयर 2। बट आप फ्यूचर मैक्सिमम कहना इसे 5-6 साल या 10 साल तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर एक टाइम के बाद यू हैव टू अज्यूम कि स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ होगा। Are you following? Even in our practical life, we can max predict our future for 10 years. बट उसके बाद हम भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं बस 10 साल के बाद अब मुझे ऐसी स्टेबल लाइफ चाहिए, स्टेबल इनकम, स्टेबल फैमिली, किड्स वगैरह। आफ्टर 10 years स्टेबल इट शुड रन। बट पहले 10 साल कहना इसे वी आर वेरी एक्साइटेड, मुझे इतना कमा लेना है। फिर कुछ मान लो कुछ खराब हो जाए लाइफ में तो हमारी कमाई भी डाउन हो जाती है। बट आफ्टर 10 years कहना इसे हम खुद ऐसा सोचते हैं कि बस अब स्टेबल हो जाए। सो दिस इज हाउ even in business it works. Initially we can predict the future but we cannot predict a very long future. ठीक है, so in that case we assume we have to take the base of stability. Clear? Yes. So these are the three likely possibilities of dividends, and let's understand these three sub models one by one. So let's take sub-model 1, which says dividend will not grow. It will remain constant. Uniformity in dividend. ठीक है? So let's assume the last dividend paid by the company and it is technically denoted as D0. Means हम सारा calculations आज कर रहे बैठे हैं। टुडे वी आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग वेदर टू बाय द शेयर और नॉट। ठीक है, तो आज के पहले कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड पे किया होगा दैट इज D0। फॉलोड। टुडे वी आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग वेदर टू बाय द शेयर और नॉट, उसके लिए हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आज हम वैल्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो आज के पहले कंपनी ने जो लेटेस्ट डिविडेंड दिया होगा दैट इज D0। लेट्स अज्यूम 10। So considering the first dividend model, considering the first constant dividend model, can I say year 1 में we will expect a dividend of rupees 10, year 2 में that is D2 we will again expect a rupees of 10 dividend, year 3 में we will expect a rupees of 10 dividend, correct? And like this till infinity we will expect a dividend of rupees 10. No growth in dividend. Clear? Now I ask you find the value of equity shares. तो मैं जब ये क्वेश्चन पूछता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको फटाक से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन याद आना चाहिए कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस फ्यूचर कैश इनफ्लोस एट KE. So let's assume KE to be 12%. So कहना है ये सारे फ्यूचर कैश इनफ्लोस को डिस्काउंट कर ले, सबको समेशन कर ले तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गया, फिर आप उसको एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर करोगे।
Underpriced, overpriced. If it is underpriced, you will buy. Overpriced, you will ignore. Clear? This is how valuation works. Okay. So can I say value of equity is nothing but all future dividends? ठीक है. So future dividends में D0 नहीं आएगा. वो तो D0 means already paid dividend. तब तो मैं कंपनी में इन्वेस्टेड भी नहीं था. Are you following? So D1 upon 1.12 raised to 1. सर ये 1.12 क्या है? K is 12% ना. So that's why I've taken 1.12 raised to 1 plus D2 upon 1.12 raised to 2 plus D3 upon 1.12 raised to 3 and plus D infinite, sorry, बीच में बहुत सारे आएंगे, plus D infinite 1.12 raised to infinite. ठीक है. Don't, I know there are some questions, but don't ask questions right now. Let me just complete everything. And then if you have questions, then ask. Because आगे जो भी समझाओगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. सो एज पर द बेसिक फंडा ऑफ वैल्यूएशन, दिस इज हाउ इट शुड बी. डिस्काउंटिंग D1. D1 हमारा कितना था? 10 रुपया. At 12%, if we discount 10, that is present value of year 1 dividend. ठीक है. Likewise, D2 is 10, discount 10 for year 2 का discounting factor. Likewise, 10 in year 3. Likewise, 10 till infinite period. ठीक है. Clear till here. So I will discount this 10 till infinity at 12%. सबका total will give me value of equity. बोलो, any doubts still here? ये clear हुआ? अगर ये नहीं समझा तो आगे का अगेन इट विल बी अनक्लियर टू यू ऑल. ठीक है. सो ये क्लियर हो गया. ओके. सो नाउ, सो if D1 is 10, if D2 is also 10, if D3 is also 10, can I just write D instead of D1, D2, D3? ये सब 10 ही है ना. तो सिर्फ D लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. So I can just write सिर्फ D as well. Now, so in short, it will look like this: 10 divided by 1.12 raised to 1 plus 10 divided by 1.12 raised to 2 plus 10 divided by 1.12 raised to 3 plus 10, like this will go on till infinity, 1.12 raised to infinity. This is how the chain will look like. This is how the series will look like. So if you closely look this series is nothing but sum to infinite series of geometric progression. This is a series of mathematical concept called sum to infinite series. Infinity तक जा रहा है ये sum of geometric progression. This is a mathematical concept. Okay? अगर ये सीरीज को ध्यान से देखो, इट इज नथिंग बट सम टिल इंफिनिटी, सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो considering that mathematical concept, the formula is derived over here. See, अब logically सोचो, can we sit and calculate and discount this till infinity? Practically सोचो, क्या हम इंफिनिटी पीरियड तक डिस्काउंटिंग कर सकते हैं प्रैक्टिकली? नो, राइट? सो वी हैव अनदर टेक्निक. वी हैव टू डिवाइस सम फॉर्मूला जिसमें ये सारा लॉजिक फिट हो जाए. आर यू फॉलोइंग? एंड सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. द लॉजिक इज दिस: सिट टिल इंफिनिटी एंड डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोस. But it is practically not possible to sit till infinity and discount the future cash inflows. ठीक है. तो उसके लिए we have to devise some formula जिसमें ये logic fit हो जाए. तो वो formula बनाने के लिए we have taken the help of which mathematical concept? Sum to infinite series of geometric progression. ठीक है. A not present value annuity. This is sum to infinite series of geometric progression. ठीक है. And based on sum to infinite series of geometric progression, using that concept, the formula derived is
D upon K. This is the simple formula when dividends are constant. ये formula का logic क्या है? Logic is this. Sit till infinity and discount all future cash inflows. ठीक है? But sitting till infinity is practically impossible. So उसके लिए हमें एक फॉर्मूला, हमें कोई और मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, कोई टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी, उससे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एंड वो लॉजिक को इस फॉर्मूला में इंप्लीमेंट कर सके, शॉर्टन कर सके आर कैलकुलेशन. आर यू फॉलोइंग? सो दैट फॉर्मूला इज डी अपॉन के एंड दिस डी अपॉन के फॉर्मूला इज डिराइव्ड using the concept of sum to infinite series of geometric progression, which is a mathematical concept. तो अब ये concept क्या है? That is not in your syllabus. Are you following? The syllabus, the content in your syllabus is this. See, it is like this. Let's say आपको 10th floor पे जाना है, ठीक है? 10th floor पे जाना है तो there is a lift, ठीक है? So ideally, what we will do, we will take the lift and reach at 10th floor. But will you go in depth कि ये lift कैसे बनी है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें कितने नट्स बोल्ट्स लगे हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? Will you go in that background? Is that relevant for you? So ये वैसा है. Sum to infinite series of geometric progression concept is not relevant at FM level. वो mathematician का काम है. Take that tool and reach to the 10th floor. Value of equity ढूंढ लो, ठीक है? So बहुत सारे students इस पे दिमाग लगाते हैं, but that is mathematician का concept. उन्होंने लिफ्ट बना के दे दिए आपको. Just take the lift, reach the 10th floor. हमें 10th floor पे पहुंचना है. Don't go in the background of lift का mechanism. Are you understanding? ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे इसका लॉजिक नहीं पता है, मुझे इसका लॉजिक भी पता है, मैं ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके भी बता सकता हूँ, बट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू ऑल. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट. आर यू फॉलोइंग? ये सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला क्या थी, वो फॉर्मूला लेके मैं ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकता हूँ. आई कैन एक्सप्लेन यू दैट एज वेल, बट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू एट दिस लेवल. ठीक है, इसलिए नहीं समझा रहा हूं. क्लियर? सो इन शॉर्ट, if the dividends are constant, the value of equity is simply D upon K. ठीक है everyone? And ये D upon K का ideally the core logic is this only, discounting all future cash inflows till infinity at K. यही लॉजिक को एक फॉर्मूला में समा दिया है, फिट कर दिया है. क्लियर? वो फिट करने का पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो इट इज सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, विच इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज नॉट इन सिलेबस ऑफ एफएम. अंडरस्टूड? हाँ, अंडरस्टूड. साउथ स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, बट अगेन सी, दिस इज अ फॉर्मूला. सो फॉर्मूला जब भी बनाते हैं ना, whenever we derive some formula, there are some assumptions behind creating that formula. ठीक है? So formula works, ideally works only when assumptions works. ठीक है? If any of the assumptions fail, तो formula will also fail. ठीक है? अगर formula fail, तो सर हम क्या करें? तो follow the logic, keep on discounting the future cash inflows. ठीक है? Okay, very good. Yes, sir has already taken, so you have understood that concept. Clear, but it is not relevant from FM perspective. Okay, you take the mechanism and you move forward in life. Clear? Okay, so moving forward, I told you this as this formula is created considering some by default assumptions behind. So if any of the assumptions fail, your formula will fail. ठीक है? तो assumption number 1 of this model is, can I say we have assumed कि dividend will remain constant till infinite? Yes or no? So dividend remains constant. This is assumption number 1. सर अगर dividend constant नहीं है, so this formula will not work. Don't apply constant dividend model in that case. Go for another model.
Clear? So इस formula का assumption is dividend should remain constant. Second, KE should also remain constant. अगर KE constant होता है till infinity, only then this formula will work. मान लो आपके अंदर एक कीड़ा है, कीड़ा क्या है कि एवरी ईयर KE चेंज करना है, then don't apply this formula. Go for the logic in that case. Different KE लो for different years and discount till the time you want to discount. क्लियर? 100 years, 150 साल, 500 साल, जब तक बिजनेस चलाना हो तब तक बैठ के डिस्काउंट करो. दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली व्हेन स्टैंडर्ड assumptions hold true. If any of the assumptions you want to fail, then this formula will not work. And then in that case, you go for the logic. Sit and discount all the future cash inflows till the period you are assuming. Clear? And third, we are assuming life is infinite. याद करो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग. जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, whenever we start a new business, we assume कि this business will run जब तक है जान, हमारी जान नहीं, इवन हमारे लेगेसी की जान. आर यू फॉलोइंग? जन्मों जन्म तक ये चलता रहेगा. दिस इज व्हाट वी अज्यूम व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस. Understood? So life is infinite. This is going concern assumption. So if any of the assumption fails, this formula fails. So in that case, if formula fails, only window that will help us, that will save us is logic. Discounting of all future cash inflows till the time you want to discount. क्लियर? अगर आपको लग रहा है मैं 100 साल बिजनेस चलाऊंगा, तो 100 साल पे कैलकुलेशन एंड कर दो एंड डिस्काउंट करो. हाँ, क्लियर? फॉर महाराष्ट्रन स्टूडेंट समझ ल, कड ल. फॉर गुजराती स्टूडेंट्स समझाई गयू. फॉर हिंदी स्टूडेंट समझ में आ गया. बस इतनी भाषा आई नो, समझ ले. या okay, so now we just covered first constant dividend model that we covered, and this is under the umbrella of dividend discount model. Dividend discount model was under the umbrella of valuation of equity, and valuation of equity we are learning so that we can better understand the yes no model. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं वो समझना चाहिए. So next model is constant growth model. Now here the dividend will not remain constant. The amount of dividend will change, but at a constant rate it will change. So again, let's take last dividend, which is denoted as D0, as rupees 10. K is, let's say, 12% again. 12%. Okay? And now let's assume growth of 9%. 9% is our growth rate. Okay? So can you all calculate and tell me कि फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना होगा? क्या वो 10 रुपया होगा कि 10 से कुछ ज्यादा होगा? कैन आई से इट विल बी 10 प्लस 9%? यस और नो? डिविडेंड में अब हम ग्रोथ लगा रहे हैं, ग्रोथ चढ़ा रहे हैं. बोलो, ईयर 1 का डिविडेंड कितना आया? कैन यू ऑल कैलकुलेट? लेट मी कैलकुलेट. 10 प्लस 9%. 10 plus 9%, 10.9. Likewise for year 2, वो 10.9 नहीं रहेगा, उस पे 9% ग्रोथ होगा. आर यू फॉलोइंग? तो कितना आया? लेट मी जस्ट कैलकुलेट. 9% we will end. So it comes to what? Sorry, 12.95. And ऐसा growth will continue on and on and on till infinite period. Clear, everyone? So can you see now the amount of dividend is not constant. It is changing every year. पहले जो D10 था
अब वो D1 10.9 हो गया, D2 11.881 हो गया. So again, coming back to our core principle, value of equity is nothing but discounting of all future cash inflows in the form of dividend at K. ठीक है. So year one में can I say it is 10.9, इसको हम डिस्काउंट करेंगे 12% प्लस 11.881 divided by 1.12 raised to 2 plus 12.95 divided by 1.12 raised to 3, and again this will go on till infinity. Clear everyone? Hey, अब I cannot just simply write D. I have to write D1 specifically for year 1. I have to write specifically D2 for year 2. I have to write specifically D3 for year 3. अब सिर्फ D नहीं लिख सकता because every year dividend is not same. It is changing. Are you understanding? And year till infinity. So D4, I cannot just write D. I have to specifically write as D4 only. Clear? So if we discount this future cash inflows till infinity, and if we sum up all the present value, we will find price of the share today. Clear everyone? Again, can I say this is, again, if you closely see, this is sum to infinite series of geometric progression. But now when R is not constant, this is again a sum to infinite series of geometric progression only, but sorry, R is constant, but growth rate is not constant. R in the form of growth rate is not constant. This is that scenario. Okay? So again, practically impossible to sit and discount in infinity. So again, we need to devise some formula that fits all the above logic. Yes or no? So in that case, the formula using the concept of sum to infinite series of geometric progression. Sorry, again, growth is constant. Huh? I forgot. Growth is constant. In आगे वाला मॉडल देयर वाज नो ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ है. सो कंसिडरिंग सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद ग्रोथ. ठीक है. आगे वाला जो मॉडल था दैट वाज सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विदाउट ग्रोथ. दिस इज विद ग्रोथ. ठीक है. सो अगेन बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट a very short formula is derived. Value of equity share today is nothing but D1 upon KE minus G. This is the formula. This is the price or the worth of the share today. It is nothing but D1 upon KE minus G. सर ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? लॉजिक इज सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सर उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है कि एवरी ईयर का डिविडेंड you sit and discount till infinity. ठीक है. But every year का dividend amount is not same. It is changing. Clear everyone? Are you understanding? So can I say as per this formula, D1 is 10.9, KE is 12%, growth is 9%. It is nothing but 0.09. So solve करो. Can you calculate this on Calci? 10.9 divided by 0.1 divided by 0.03, which comes to 363.33 rupees. So what do you understand by this amount of 363.33? It simply means, according to you, the worth of the share today is 363.33. Let's assume कि मार्केट में यही शेयर 500 रुपए में बिक रहा है एक्चुअली. So is it underpriced ki overpriced? It is overpriced. Worth is 363. मतलब I am max ready to pay 363. I cannot pay above that.
So if actual price is 500, it is overpriced. Don't buy the share. अच्छा, ऑलरेडी आपके पास ये शेयर है तो इट इज ओवर प्राइस्ड. अभी 500 रुपया मिल रहा है, सेल कर दो और निकल जाओ. कल उठ के this actual price will fall and come to worth, fall and come to its original worth. This is how actually the mechanism works. अच्छा, मान लो the worth is 363, means you are max ready to pay today 363, but actual में वो बिक रहा है 200 रुपए में. It is underpriced. Good opportunity, invest in this share. कल उठ के इसका प्राइस बढ़ जाएगा. Clear? So again, when there is a constant growth model, again we use the concept of sum to infinite series of geometric progression with growth. We derived a formula called d1 upon ke minus g. Okay, d1 upon ke minus g, and this model was given by author called as Gordon, Myron Gordon, and hence the above formula is also called as, the constant growth model is also called as Gordon's model. Yes, D1 is dividend expected in year 1. मीन्स आज आप कैलकुलेट करने बैठे हो, आज आप वैल्यू ढूंढने बैठे हो, तो अब आज से 1 साल में जो डिविडेंड मिलने वाला होगा in the coming year, that is D1. Yes, and in formula always it will be D1 if Gordon's formula is applied. ठीक है? So this model P0 is equal to D1 upon Ke minus G is Gordon's model. Again, ये सम टू इनफाइनाइट सीरीज के कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला कैसे डिराइव हुई है उसका भी लॉजिक है, हाँ पूरा, बट at this point it is not relevant for you. We will not understand that. Again, that same principle, take the lift, reach the 10th floor. Clear? But इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इज डिस्काउंटिंग ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, but all future dividends are not same. They are changing every year at a constant rate. That is the logic. Clear? Followed everyone? Okay. Again, this is a formula. अच्छा, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फॉर्मूला सीखी थी ना, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी. ये फॉर्मूला देखी देखी लग रही है, के इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर. के इज इक्वल टू, यस, ये देखिए ये फॉर्मूला है ना, इसमें से डिराइव हुई है. द ओरिजिनल फॉर्मूला गिवन बाय गॉर्डन वाज P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी. For any share Frischti, I have to find the last dividend paid and the KE and the growth of, yes, correct, growth in the dividend. Growth कैसे कैलकुलेट करते हैं, that also you have already learned in the cost of capital chapter. It is nothing but return on equity multiply by retention ratio, ROE into retention ratio. वैसे growth कैलकुलेट होता है. Okay, so you have seen this formula, right? ठीक है ना. इसे अगर मैं G को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं, द फॉर्मूला बिकम्स के माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0. करेक्ट? P0 को ऊपर लेके जाओ, कैन आई से P0 के माइनस जी विल बी D1. P0 को अलग कर देता हूं, के माइनस जी को डिनोमिनेटर में लेके आता हूं. अंडरस्टूड? So original formula was this: P0 is equal to D1 upon Ke minus G. This is the original Gordon's formula. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो हमने ट्रांसपोजिशन की है, फॉर्मूला को उल्टा सुल्टा करके हमारे कन्वीनियंट के लिए हमने के की फॉर्मूला बनाई. अरे फॉलोइंग, यहां से ऐसे स्टेप्स करते 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 उल्टा जाते 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 एंड वी फाउंड के एज पर गॉर्डन्स फॉर्मूला. This was Gordon's formula in cost of capital chapter, if you remember. But the original Gordon's formula, Gordon ने K की formula नहीं दी थी. He gave the formula to find P0. ठीक है? फिर उस formula को transposition करके, उल्टा सुल्टा करके, we for our convenience found K. Clear? So this is Gordon's formula, constant growth model. डिविडेंड विल ग्रो एवरी ईयर बट एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है? बट गॉर्डन के भी कुछ अपने अजम्पशंस थे. सो द फॉर्मूला ऑफ गॉर्डन विल ओनली वर्क व्हेन अजम्पशंस होल्ड ट्रू.
assumption number one. Assumption number one was, now D will not remain constant. Huh? G will remain constant. Growth remains constant. ठीक है. Assumption number two, KE will remain constant. Assumption number three, life of the company is infinite. This is assumption number three. And very important, KE has to be greater than G. अगर KE less than G है, तो अगर फॉर्मूला देखे तो कैन आई से लेट से इफ K is less than G means 0.2 and let's say G is 15%. तो कैन आई से नेगेटिव में आंसर आएगा. नेगेटिव में प्राइस विल कम इन नेगेटिव. प्राइस इन नेगेटिव means you are selling the shares and you are paying to the buyer. This is what negative price means. Are you following? Which is practically impossible in equity share. Clear? Equity share में price negative नहीं जाती कभी भी. So that's why assumption number 4, K should always be greater than G. Clear? Any doubts? Any concerns? So if any of the assumptions fail, let's say if you have K less than G, then this formula will not work. आपकी ये formula काम नहीं करेगी. Go for the logic. Sit and discount all the future cash inflows. ठीक है. अगर आप K constant नहीं रख रहे हो, again this formula of Gordon will not work. Growth, G constant नहीं है. See in my example, G was constant every year. Can you see 9% मैंने constant रखा है. So if growth is also not constant, again this formula will not work. Sit and calculate using the logic. Clear? So formula is devised having some background base of assumptions. So if any of the assumptions fail, background fails and calculation fails. Yes, G is B into R. R is return on equity, B is retention ratio. So higher the retained earnings, higher would be the growth of the company. Okay, now sub model 3. Variable plus constant growth model. Variable plus constant growth model. ठीक है. Now under this model, initially for few years, growth is not constant. Growth will change. So let's say last dividend paid by the company is ₹10. ठीक है. So in first year, let's assume first year में G is 8%. Let's assume K as 20%. ठीक है. So tell me D1 कितना होगा? D1 would be 10 plus 8%. Correct? 10.8. Now for year 2, let's assume growth rate is not same. Now it is variable. So let's assume growth rate in year 2 as 10%. So D2 will be 10.8 plus 10%. You will add growth on D1. Okay? So 10.8 plus 10% comes to 11.88. Assuming third year में G of 9%. 9% लेते हैं. So can I say D3 will be 11.88 plus 9%, 12.95. Okay? And now from fourth year onwards, from fourth year till infinity, I am assuming a stable growth of 12%. So can I say D4 will be 12.95 plus 12%? 12.95 plus 12%, 14.5. फिर वैसे D5 कैलकुलेट करेंगे 14.5 plus 12%. एंड वैसे अब
from fourth year till infinite life, we are assuming a stable growth of 12%. ठीक है? And वैसे plus 12% करते करते करते, we will reach till infinity. But if you closely see, can I say initial for few years, growth rate is variable, it is not constant. Clear? So now again, let's come back to our core principle. Value of equity, worth of share today is nothing but d1 upon 1 plus k raised to 2 plus d2 upon 1 plus k raised to 2 plus d3 upon 1 plus k raised to 3 and so on till infinity. 1 plus k raised to infinite. Okay? Correct? Yes, it's changing every year. Now, a few couple of questions. Just think and tell me. क्या हम हमारी फॉर्मूला नंबर 1 d अपॉन के इस केस में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? टेल मी. डी अपॉन के फॉर्मूला नंबर 1 कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, क्या हम डी वाली फॉर्मूला डी अपॉन के वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नो. व्हाई नो? बिकॉज उस फॉर्मूला का अजम्पशन था डिविडेंड शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है? सो सिंस डिविडेंड इज नॉट कांस्टेंट, दैट फॉर्मूला फेल्स, वी कैन नॉट अप्लाई. टेल मी, क्या हम यहाँ पे शुरुआत से यहां से एट दिस पॉइंट कैन वी अप्लाई गॉर्डन्स फॉर्मूला? गॉर्डन्स फॉर्मूला क्या था? d1 अपॉन के माइनस जी. बट गॉर्डन का अजम्पशन था ग्रोथ शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है? सो इज ग्रोथ कांस्टेंट इन आर इलस्ट्रेशन ओवर ईयर? सो स्टार्टिंग से गॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट कैन आई से फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स गॉर्डन्स फॉर्मूला के सारे अजम्पशन इज होल्डिंग ट्रू, नॉट फ्रॉम स्टार्ट इटसेल्फ, बट फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स growth is constant, g is constant. ठीक है? k is greater than g. Are you following everyone? Life is infinite. All the assumptions of Gordon's are holding true from this point. Yes or no? From fourth year. Why? Because fourth year से growth is constant at 12%. Yes or no? So can I say मैं आज Gordon's formula apply नहीं कर सकता? I cannot apply it today. बट फोर्थ ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के शुरुआत से गॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है? तो थर्ड ईयर के एंड से कैन आई अप्लाई गॉर्डन्स फॉर्मूला? यस और नो? यस, आई कैन डेफिनेटली अप्लाई गॉर्डन्स फॉर्मूला. सो व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग प्राइस टुडे, the formula was d1 upon ke minus g. But now we are calculating, we are applying Gordon's formula at the end of third year. So can I say it will be d4 upon ke minus g? फोर्थ ईयर से, यानी कि थर्ड ईयर के एंड से, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ ईयर ग्रोथ इज कांस्टेंट एट 12%. क्लियर? सो अगर गॉर्डन्स फॉर्मूला आज कैलकुलेट करना हो तो वी टेक d1 इन द न्यूमरेटर, बट थर्ड ईयर के एंड में गॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई करनी हो तो वी विल टेक d4 इन द न्यूमरेटर. आर यू फॉलोइंग? लाइकवाइज अगर मान लो आपको गॉर्डन्स फॉर्मूला एट द एंड ऑफ 10th ईयर ढूंढना है तो फॉर्मूला विल बी d11 अपॉन के माइनस जी. कौन से साल से गॉर्डन्स फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड? दैट बिकम्स द न्यूमरेटर. अंडरस्टूड? Any doubts? So yes, sir, from the start of fourth year, it means from the end of third year, we can definitely apply Gordon's formula because उस साल से Gordon's formula के सारे assumptions are holding true. ठीक है? So can I say applying the Gordon's formula, I will get something called as P3? Yes or no? It is nothing but d4 upon k minus g. मेरा d4 in my present illustration it is 14.5, assuming the constant %. So 14.5, my ke is 0.2,
and my now constant growth rate under Gordon's model is 12%. Clear? इस स्टार्टिंग से एंड तक कैसे, वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि स्टार्टिंग में वी कैन नॉट अप्लाई गॉर्डन्स फॉर्मूला. स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट इज चेंजिंग ना. पहले साल में 8% था, दूसरे साल में 10% था, तीसरे साल में 9% हुआ. तो स्टार्टिंग से यू कैन नॉट अप्लाई गॉर्डन्स फॉर्मूला, बिकॉज गॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो उसके साथ एक कंडीशन है कि ग्रोथ शुड बी कांस्टेंट. सो वो कंडीशन स्टार्टिंग से फुलफिल नहीं हो रही है, बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर इनफाइनाइट पीरियड तक ग्रोथ इज रिमेनिंग कांस्टेंट. तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर इट मींस P3 एंड ऑफ थर्ड ईयर, वहां से आप गॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो P3 विल बी D4 अपॉन K माइनस G. तो ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. P4 is equal to 14.5 divided by 0.08, 181.25. Understood? So ये जो फिगर आया 181.25, is this worth of the share today की at the end of third year? बोलो ये जो P4 सॉरी P3 आया, P3 not P4, ये जो P3 आया, is this worth of the share today or at the end of year 3? क्या लग रहा है? Obviously this is worth not today, this is worth at the end of year 3, correct? So can I say we have to discount P3 as well along with D3, because हमें तो आज ढूंढनी है worth. So 1 plus K raised to 3, we need to discount this as well. Are you following everyone? Clear? So this is how variable plus constant growth rate works. You individually discount year 1, 2 and 3 on the calci separately. फिर P3 को भी अलग से डिस्काउंट करो. ये जो P3 आया है ना, वो ईयर 4 से इनफाइनाइट पीरियड तक के सारे डिविडेंड्स आ गए उसमें. क्लियर एवरीवन? P3 से टिल इनफाइनाइट पीरियड जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लो होने वाला है उसको एक फॉर्मूला में समा के वी फाउंड 181.25. क्लियर? सो यू हैव टू डिस्काउंट दैट एज वेल एंड फाइंड P0. Understood how to solve when the type of discounting model is variable plus constant growth model? So first 3 years normally on calci we will discount, and P3 we will calculate using Gordon's model. जो P3 आया वो P3 is nothing but bringing all the calculations from the start of year 4 till infinity. उसको सब जोड़ के applying Gordon's formula we found this price. Clear? तो उसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा. Understood dividend discount model technique? So इतना डिटेल में no one explains dividend discount technique with so much detail and comprehensively. हाँ, if you have more number of hours then और भी डिटेल में समझ सकते हैं. Okay, so this from dividend discount technique we understood the concept of value of a share. We are finding कि हमारे हिसाब से worth कितनी है. Why we are calculating this worth? So that we can compare with actual market price and we can decide the whether to buy or not. So, okay, what is this? I don't know. dn is equal to d1 into 1 plus g. ये क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता. What are you trying to exactly find from this formula? You just don't mug up the formula first. सोचो ये फॉर्मूला में फिगर्स डालू तो क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा. ट्राई टू फाइंड दैट. जस्ट डोंट मग अप द फॉर्मूला. फॉर्मूला में नंबर्स डालो, वो नंबर्स डाल के जो आंसर आ रहा है क्या, इज इट समथिंग यूजफुल, कैन आई इंटरप्रेट दिस नंबर, ऐसा सोचो एंड देन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. ओके, so with this we comprehensively cover dividend discount technique. इस टेक्निक में
हमने बाय डिफॉल्ट बातों बातों में गॉर्डन्स मॉडल भी सीख लिया. यस साइड में गॉर्डन्स मॉडल था ना, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड अंडर डिविडेंड डिस्काउंट टेक्निक. ठीक है, बिकॉज गॉर्डन का बेस वॉज वैल्यूएशन ऑफ शेयर ओनली, उसमें से ही उसने अपना मॉडल बनाया. सो उसमें ये कवर हो गया. ओके, नाउ let's see if there is any question on dividend discount model in your study material. Let's solve that and after that we will move to Walter's model. Yes, question number 5. A&R Limited is a large cap multinational company listed in Bombay Stock Exchange in India with a face value of 100 per share. So it is having face value of 100. The company is expected to grow 15% for next 4 years. And after that, that is from the start of fifth year, it will grow at a 5% rate for infinite period. तो बोलो which type of model is this? कांस्टेंट डिविडेंड है, कांस्टेंट ग्रोथ है कि कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है? यस, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, क्योंकि आगे इनिशियली फॉर फ्यू इयर्स ग्रोथ रेट इज 15%, फिर इट इज ग्रोइंग एट अ स्टेबल रेट ऑफ 5%. सो इट इज वेरिएबल प्लस कांस्टेंट रेट. सो कैन आई से इस क्वेश्चन में हमारी गॉर्डन्स फॉर्मूला एट द एंड ऑफ ईयर 4 लगेगी. P4 पे गॉर्डन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. उसके पहले वी कैन नॉट अप्लाई गॉर्डन्स फॉर्मूला बिकॉज ग्रोथ इज नॉट कांस्टेंट. क्लियर? So P4 will be d5 upon ke minus g. Okay. The shareholders expect 20% return on their shareholders. ठीक है? So whatever shareholders expect is income to them, cost to the company. So this 20% is K. Company paid 120 as a dividend per share for the current financial year. So can I say they are trying to say that this dividend, see now there is some, see now here different opinion can arise. Different views can come up. View number 1, करंट फाइनेंशियल ईयर बोला है, मींस आने वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका 120 रुपीज होगा. मींस D1 is 120 rupees. This is one interpretation you will find in many of the authors book because करंट फाइनेंशियल ईयर बोला है ना. आज हम कैलकुलेट करने बैठे हैं, अब आने वाले जो साल है करंट ईयर उसका डिविडेंड इज 120. So some authors have assumed this as 120. But again, another word, company paid means already ये भर चुके होंगे. We are now sitting to value today. So हमें तो ये डिविडेंड नहीं मिला होगा. So this would be last dividend. This is also one of the assumptions. ठीक है? So any of the assumptions you write when there is ambiguity in language, in that case you write a note आफ्टर योर सोल्यूशन. ठीक है? सो आई विल अज्यूम कि कंपनी ने पेड लिखा है ना 120, इट मींस दिस इज लास्ट डिविडेंड फॉर अस. हम जो वैल्यूएशन प्रोसेस करने बैठे हैं उसके पहले जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर होगा उसका डिविडेंड पेड वाज 120. ठीक है? सो फॉर अस लास्ट डिविडेंड पेड इज 120. एंड लास्ट में टू रिमूव द एम्बिग्विटी वी विल राइट अ नोट अबाउट इट. Clear? So can you tell me D1 कितना होगा? Can I say it will be 10 plus 15%? पहले ईयर में ग्रोथ इज 15%, 11.5.
D2 will be 11.5 plus 15%. ईयर 2 में भी 15% ही हो रहा है, सो 13.23. लाइकवाइज ईयर 3 में टेक अप टू 2 डेसिमल सा चलेगा. 13.23 प्लस 15%. 15 बाई 10 इट इज 120. क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस 120 है. माय बैड, I mixed up my illustration and present question. Yes, yes, 120. So 120, sorry, year 2 में change हो जाएगा. So 120 plus 15%, 138. Sorry, I mixed my illustration and this question. So 138 plus 15%, 158.7. 158.7 plus 15% for year 3, 182.51. Year 4, 182.51 plus 15%, 209.88. ठीक है. And up say from the start of year 5, it will grow at a constant rate of how much percent? 5% बोला है. So plus 5%, 220.37. 220.37. ठीक है. इस साल से company is growing at a constant rate. So you can apply Gordon's formula from the end of year 4, that is from the start of year 5. Clear? So now can I say value of equity is nothing but discounting all the future cash inflows in the form of dividend. So D1 is 138. Our required rate is 20%. Year 2 में था 158.5. Our required rate is 20%. For year 3, dividend is 182.51. Our required rate is 1.2 raised to 3 plus year 4, 209.88 divided by 1.20 raised to 4, and last but not the least, something called as P4. Okay, so let's calculate P4 using an X trick or using an working note. Okay, P4, can I say it will be D5 upon KE minus G, because year 4 के end से Gordon's formula के सारे assumptions are holding true. So D5 we calculated as 220.37. So 220.37, KE is 0.2 and constant growth rate is 0.5 now. तो बोलो P4 कितना आया? 220.37 divided by 0.15, 1469.133. ठीक है. So this is P4. This is not worth of the share today. This is worth of the share at the end of year 4. So we need to discount this as well. So can I say year 4 में we will discount 1469.33 plus divide by 1.20 raised to 4. So if you look carefully, year 4 में you get 209.88 in the form of dividend plus you get P4. Clear? So now you just apply, you take these numbers on Calc and normal discounting करो. 138 divided by 1.20 press equal to 1 time, plus 158.5 divided by 1.20 press equal to 2 time, m plus 182.51 divided by 1.20 press equal to 3 times.
and plus you add this up. 209.88 plus 1469.33 divided by 1.20 press equal to 4 times m plus mrc. मैं सारे कैलकुलेटर के स्टेप्स भी बोल रहा हूं. सो नाउ एवरीवन शुड गेट सेम आंसर. कितना आया? प्लीज लेट मी नो द आंसर. ये बोलो ना. 1 2. ए वन सबका अलग अलग आ रहा है. 1321 1214. लेट मी चेक. बाकी सब स्टूडेंट्स वेदांत 1321, गायत्री 1214. अदर स्टूडेंट्स वेयर आर यू ऑल स्टक? व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? 1140. ये क्या कर रहे हो कैलसी पे? टेक 138 डिवाइड बाय 1.20 प्रेस इक्वल टू 1 टाइम m प्लस. करो अब साथ में करो बिकॉज एवरी वन इज गेटिंग डिफरेंट आंसर. नेक्स्ट टेक 158.5 ऑन कैलसी डिवाइड बाय 1.20 प्रेस इक्वल टू 2 टाइम्स. हाँ मर अनदर फिगर प्लस 182.51 डिवाइड बाय 1.20 प्रेस इक्वल टू 3 टाइम्स m प्लस. I am dictating the steps. Even then, everyone is getting different answer. How can that be possible? It means आप ही कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो. For year 4, 1469.33 plus 209.88. Whatever the amount comes, divide by 1.20, press equal to 4 times m plus. And now do MRC. Even after dictating, it is surprising that everyone is getting different answer. So that means आप घाय कर रहे हो, बहुत फास्ट कैलकुलेट करो. यस 1140. सो नाउ दिस आंसर इज मैचिंग विथ खुशी. हाँ अब सबका सेम आ रहा है. देखो वेदांत 1140, खुशी ऑल्सो गॉट 1140. ठीक है. सो आंसर अब बाकी लोग 1139 1140 इज क्लोज. हाँ दैट्स फाइन. बाकी लोगों का क्या आ रहा है? A fast, we are running short. 1140. So now the answer, I assume this is correct. 1140. So can I say worth of share according to me today is 1140. Now let's see actual stock exchange में वो कितने में बिक रहा है. The shares of the company traded at an average price of 3122. ये हमारे हिसाब से इसकी वर्थ सिर्फ 1140 है. बीएससी में स्टॉक एक्सचेंज में इट इज ट्रेडिंग एट 3122. बोलो अंडर प्राइस्ड की ओवर प्राइस्ड? एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड. सो फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर. इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज नथिंग बट टू फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है. वैल्यू ऑफ शेयर के बहुत सारे नाम है. समटाइम्स दे रिफर इट एज इंट्रिंसिक वैल्यू. Sometimes they refer it as theoretical value. Sometimes they refer it as fair value. Sometimes they refer it as worth. So this all terms ultimately are trying to tell you ki calculate value of share. Understood? And then compare with actual price. Okay? So since actual price is greater than value of share, it is overpriced and company should not buy the share. अच्छा ऑलरेडी आप शेयर्स लेके बैठे हो तो निकल जाओ इस कंपनी से. इट इज ओवर वैल्यूड. बबल बना हुआ है अभी, वो फूट जाएगा बबल. अंडरस्टूड एवरीवन? इन्फ्लेटेड प्राइस है ये. इट इज ओवर प्राइस्ड. क्लियर
And last but not the least, I will write down a note just for the clarification. It is assumed that dividend paid of rupees 120 is D0, last paid dividend before we इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. ठीक है, हम आज कैलकुलेशन करने बैठे हैं तो आज के पहले कंपनी ने जो डिविडेंड एक्चुअल में पे किया है दैट इज लास्ट पेड डिविडेंड. क्लियर? सो दिस नोट यू कैन जस्ट राइट सो दैट एग्जामिनर द चेकर गेट्स अ क्लैरिफिकेशन कि हाँ उसने स्टूडेंट ने ये अज्यूम किया है, ठीक है, उस हिसाब से उसने कैलकुलेट किया है. Clear dividend discounting technique. Okay, now let's move to Walter's model. Walter's model. Again, Walter's model is on yes side. A. Why Gordon's model was on yes side? See, if you change the growth every year, can I say dividend will change every year? Dividend will change means P0 will change every year. So that's why Gordon was on the yes side. If you change the dividend, if your payout changes in the dividend, then price of the company will change, value of share will change. Understood? That's why Gordon was on the yes side. Because Gordon's formula का base is only dividend. So if growth changes, यानी कि रिटेंशन रेशियो चेंज हुआ होगा तब ग्रोथ चेंज होगा. अच्छा, रिटेंशन रेशियो चेंज मींस डिविडेंड पे आउट वुड हैव चेंज्ड, तब रिटेंशन रेशियो चेंज हुआ होगा. सो इफ डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी चेंजेस, it affects the dividend amount. Dividend amount is affected, then obviously price will fluctuate. Clear? Price fluctuate, so wealth of the shareholders will obviously fluctuate. Understood? Because Gordon ka base, he only base is the dividend and growth rate. Okay. Now moving to Walter's model. Walter's model is also on the yes side. Relevance theory में आता है. Means according to Walter also, if dividend payout ratio changes, if dividend decision of the company changes, यानी कि 10% आज dividend दिया है, कल 90% करते हो, तो P0 will definitely change. ठीक है? Again, Walter has also given the formula. अब वॉल्टर की फॉर्मूला जो बनी है ना, सी आई विल ट्राई टू गिव यू एक्सप्लेन यू द डेरिवेशन, बट डेरिवेशन आप सिर्फ इस सेशन के लिए समझो. इस सेशन में समझ के आप लॉजिक भूल भी जाओगे, डेरिवेशन भूल भी जाओगे तो भी नो वरीज, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. FM as a paper overall it is about formats and formulas. If you are able to recollect all the formats, all the formulas perfectly, then FM would be smooth drive for you. ठीक है? So again this chapter में जितने भी मॉडल है ना, सबकी अपनी अपनी फॉर्मूला है. आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखनी है, बट जहां जहां मुझे लगे कि इसका डेरिवेशन समझाना would might be better for the student, so I might explain derivation as well, but from examination perspective you can directly remember the end formula. ठीक है? Okay. Can I say under cost of capital chapter there was a formula for KE. There were 6 different formulas for KE. One of the formula was for KE was constant earnings model, EPS upon MPS. Yes or no? ये फॉर्मूला आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखी है. दिस वॉज फॉर्मूला व्हेन अर्निंग्स वॉज कांस्टेंट टिल इनफाइनाइट. ठीक है? सो वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट KE was EPS upon MPS. ठीक है?
Now, just to denote this in simpler terms, I will write EPS as E, MPS, market price per share, current market price per share is denoted as P0. ठीक है, एंड KE को KE ही रख रहा हूं जस्ट फॉर easy understanding of the formula. Let's denote EPS as E. Earnings means E. Market price means current market price means at 0 year. आज क्या market price है? That is P0. ठीक है? So can I write this as, बोलो, ट्रांसपोजिशनिंग द फॉर्मूला. P0 को ऊपर ले गया, ई अर्निंग्स को एज इट इज रखा एंड के को डिनोमिनेटर में. सो P0 और के को ट्रांसपोजिशन कर दिया. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो. आंसर विल नॉट चेंज. हाँ, पहले के मिलता था, अब प्राइस मिलेगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. नाउ टेल मी, will there be any change in the answer? Plus D minus D लिखू तो can I say plus D minus D gets cancelled? So E upon K. Will there be any change in the answer? No, it will remain same. Okay. अब ये प्लस डी और माइनस डी का मैं ब्रेकअप कर रहा हूं. इट मीन्स प्लस डी को ई के पहले लेके आया, माइनस डी को एज इट इज रखा पीछे. बोलो अगेन, एनी चेंज इन फॉर्मूला? सॉरी, एनी चेंज इन आंसर? अगेन प्लस डी माइनस डी कैंसल, ई अपॉन के ही ई रहा. ठीक है, जस्ट प्लस डी माइनस डी को अलग कर दिया, अर्निंग से अलग कर दिया. ओके, सो कैन आई से P0 इज इक्वल टू, अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी अपॉन के ई प्लस ई माइनस डी अपॉन के ई. ए दोनों को अब और स्प्लिट कर रहा हूं. आर यू फॉलोइंग? डी अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के ई, बट दोनों को साथ में जोड़ू तो अल्टीमेटली आंसर वुड बी सेम. बोलो क्लियर टिल हियर? जस्ट स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर. अब अलग ही कर रहे तो कंप्लीटली आई एम डाइवोर्सिंग देम. क्लियर? ओके, नो चेंज इन द फाइनल आंसर. A, can I say this D is nothing but amount of dividend? And if I want to interpret E minus D, earnings में से dividend निकाल दे, can I say ultimately this is nothing but reserves and surplus की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं? Yes or no? D is dividend. Earnings में से dividend निकाल दे तो जो बचता है वो retained earnings होता है ना, reserves. Are you following? So ये E minus D is something, can I say, related to retained earnings? Now Walter takes the entry. See, Walter का डेरिवेशन समझा रहा हूं. अब Walter ने क्या किया, अब ये लास्ट स्टेप में उसने एक चीज ऐड कर दी. क्या ऐड करी? ये D अपॉन के एज इट इज रखा, ये E माइनस डी अपॉन के को भी एज इट इज रखा, बट जो न्यूमरेटर में E माइनस डी है ना, उसको ही मल्टीप्लाइड इट विथ ROI अपॉन के. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ P0 दैट वॉल्टर हैज गिवन. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल अप्लाई इन एग्जामिनेशन टू कैलकुलेट वॉल्टर्स मॉडल P0 वर्थ ऑफ द शेयर. सी, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया फॉर्मूला कैसे डिराइव हुई है. इट इज डिराइव from earnings upon MPS वाली फॉर्मूला, from cost of capital chapter where earnings remain constant. ठीक है, क्लियर क्लियर. अब जो कंफ्यूजन है, द कंफ्यूजन आई थिंक ओनली लाइज ओवर हियर कि उसने E माइनस डी को मल्टीप्लाई बाय ROI अपॉन के क्यों किया. ठीक है, द कंफ्यूजन लाइज ओवर हियर. Now let's understand what is this E minus D into ROI upon K. अब सिर्फ हम इतना समझते हैं, E minus D into ROI upon KE ऐसा क्यों किया. Let's understand that. बाकी तो I guess everything is clear. See, I just derived the formula
from the cost of capital chapter. KE is nothing but earnings upon market price. Earnings can be written as E market price today. Current market price is ideally denoted by P0. So this is formula for KE using constant earnings model. फिर उसको फॉर्मूला को ट्रांसपोजिशन किया. आई वांट द फॉर्मूला, आई डोंट वांट के, आई वांट टू फाइंड पी जीरो. तो मैंने एलएचएस में पी जीरो लिखा. ओके, तो के को नीचे लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. फिर आई डिड प्लस डी माइनस डी. आइडियली दिस गेट्स कैंसल्ड, सो इफेक्टिवली फॉर्मूला इज ई अपॉन के. सो अगेन आई कैन राइट ई प्लस डी माइनस डी. नेक्स्ट, ये प्लस डी को ई के पहले लिखा एंड माइनस डी को एज इट इज ई के आफ्टर रहने दिया. So again, plus d minus d gets cancelled. The effective formula is E upon K. Then I completely the denominator into two parts. D upon K plus E minus d upon K. Again, the answer will not change. Clear? फिर वॉल्टर ने क्या बोला, ये जो E माइनस डी लिखा है उसको यू मल्टीप्लाई इट विद ROI अपॉन K. ठीक है, अब उसने ऐसा क्यों किया, दैट इज द होल पॉइंट. बाकी आई गेस यहां तक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. इट इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ROI और KE क्या है. व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ROI? बोलो, आपने क्या समझा है ROI को और आपने KE को क्या समझा है? See, again, this derivation from examination perspective is of not that relevant. Huh? It is not that significant. You have to just simply apply the formula given by Walter, find the answer and move ahead. Return, आपने ये जो बोला ना आचल, that is the full form. मुझे full form नहीं जानना था, मुझे मतलब समझना था. ROI means return on investment. Full form is correct. KE means cost of equity. Again, full form is correct. But उसको interpret logically समझते कैसे हैं? So, okay. So let me explain you. Let's say this all are shareholders. ठीक है? These shareholders are investing, are giving equity share capital to the company. कंपनी को नया बिजनेस चालू करना था, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे ये सब शेयर होल्डर्स को. तो कहना है इसे दे आर गिविंग कैपिटल टू द कंपनी. करेक्ट? क्या वो ये शेयर होल्डर्स जो मैंने ड्रॉ किया है वो फ्री में कंपनी को पैसा देंगे? आर दे डूइंग चैरिटी? आर दे डूइंग डोनेशन वर्क? और दे आर हियर टू अर्न समथिंग? कहना है इसे they are giving share capital, in return they are expecting something from the company, so whatever they expect becomes income to them, cost to the company. This is what KE means. Correct? They are giving share capital, badle mein they are expecting something, so whatever they expect is income to the shareholders, but company ka cost hoga na. ठीक है? So let's say company raised this capital from shareholders and बदले में they are asking के ए मीन्स कहना है से अब मैं ये जो कैपिटल जहां जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, wherever I invest, सी कैपिटल रेस किया है तो ड्रॉअर में रखने के लिए तो रेस नहीं किया है. आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द बिजनेस. तो जहां भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, कहना है से वो बिजनेस में से आई विल अर्न समथिंग एंड दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आर यू फॉलोइंग? द रिटर्न आई जनरेट एक्चुअली ऑन द अमाउंट ऑफ दिस शेयर कैपिटल, दैट इज ROI. ठीक है? सो मैं ये कैपिटल कंपनी में लाया, वो कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस बिजनेस से आई विल अर्न सम रिटर्न, दैट इज ROI. ठीक है? अच्छा, उस ROI में से अब मुझे ये KE चुकाना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू सेटिस्फाई माई शेयर होल्डर्स ना. अदरवाइज अगर मैं ये KE उनको ना दूं तो दे विल गेट आउट ऑफ माई कंपनी, दे विल नॉट स्टे इन्वेस्टेड. सो अंडरस्टूड? ROI क्या होता है? इट इज द एक्चुअल रिटर्न that you generate from the business.
from the investment of capital. Clear? And KE is the return expected by the shareholders. Understood, everyone? ओके, सो आरओआई और केई क्या होता है वो क्लियर हो गया. ओके, नाउ लेट्स कम अगेन टू वॉल्टर्स मॉडल. इफ आरओआई एंड केई इज क्लियर, so can I say E minus D is nothing but, in short, in a simple term, it is nothing but reserves, retained earnings. Earnings में से डिविडेंड दे दे तो जो बचता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स होता है. अगर ये, अब ध्यान से सुनना, अगर ये रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी में ही इन्वेस्टेड होता तो कहना से हम आरओआई कमा सकते, सर नो. एंड अगर ये रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी में रिटेन नहीं होता तो वो किसके पास जाता? टेल मी, वो किसके पास जाता? इफ दिस रिटेन्ड अर्निंग्स वॉज नॉट रिटेन्ड विद द कंपनी तो हम ये सरप्लस का क्या करते? यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स, परफेक्ट, उनको डिविडेंड के रूप में दे देते. यस और नो? वी वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. करेक्ट? मींस ये पैसा ये सारे इन्वेस्टर को जाता. एंड कहना से वो इन्वेस्टर ये पैसा लेके बाहर कहीं इन्वेस्ट करते एंड दे वुड हैव अर्न्ड केई ओवर देयर. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी में नहीं रहता तो किसके पास जाता हो? ये पैसे का हक किसका है? Can I say shareholders have the full right on these reserves? So they would have taken these reserves in the form of dividend with them. ठीक है? Because company में retain नहीं कर रहे तो we have to distribute as dividend to the shareholders. So they would have taken this entire money. Taking this entire money, they would have invested outside. And outside में can I say they would have earned KE? Yes or no? KE कमाते ना. इस कंपनी को शेयर होल्डर्स ने 1 लाख दिया, बदले में दे आर आस्किंग 10%. लेट्स से के इज 10%. ये 10% डिसाइड कैसे हुआ? डिसाइड ऐसे हुआ है कि बाहर कहीं और इन्वेस्ट करते ना, अगर ये 1 लाख कंपनी को ना देते, बाहर कहीं और इन्वेस्ट करते तो 10% मिलता. तो हम आपकी कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो मिनिमम आपको बाहर जितना रिटर्न देना चाहिए. दिस इज हाउ एक्सपेक्टेशन इज डिसाइडेड. This is how shareholders charge. This is how shareholders expect from the company. बाहर कितना मिलता उतना आपसे लेंगे. Clear everyone? So if reserves and surplus would have been distributed in the form of dividend to the shareholders, they would have earned K. But ये तो हम बातें कर रहे कि अगर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते तो ना. But can I say currently it is with the company in the form of retained earnings? And can I say if company retains this, it will invest in the business. From the business, it will earn ROI. Are you understanding? So if reserves is not distributed as dividend, हम ROI कमा सकते हैं. Clear? So how much extra company is earning? This is nothing but simple interpolation. E minus D upon into ROI divided by K. It is nothing but simple cross multiplication. अगर कंपनी इस रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो दे वुड हैव अर्न्ड K. बट अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो दे आर अर्निंग ROI. तो हाउ मच एक्सेस, हाउ मच एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसकी बातें वॉल्टर ने करी है. क्लियर एवरीवन? सी अगेन, ये सब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो दैट आपको लॉजिक भी समझे. बट इफ यू आर फाइंडिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल टर्म, इन अ वेरी लॉजिकल टर्म. स्टिल इफ यू आर ट्राइंग डिफिकल्ट टू ग्रास्प दिस, forget everything, just go for the formula and find the answer. बट ये जो E माइनस डी इंटू ROI अपॉन KE है उसका लॉजिक आई एक्सप्लेन कि अगर ये रिजर्व्स के रूप में नहीं होता तो KE तो डिविडेंड जाता टू द शेयर होल्डर्स बाहर से कमाते KE. बट सिंस इट has reserves with the company, we would be earning ROI. So how much excess
company can generate. That is what E minus D into ROI upon K is. Clear? So with this, we officially complete the formula of Walter. ठीक है. सो अगर वॉल्टर की फॉर्मूला, अगर वॉल्टर्स मॉडल क्वेश्चन में पूछते हैं, तो अगेन वॉल्टर गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस. एज पर वॉल्टर द फॉर्मूला इज डी अपॉन के ई प्लस ई माइनस डी इंटू आर ओ आई अपॉन के ई अपॉन के ई. ठीक है. और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज डी प्लस ई माइनस डी आर ओ आई अपॉन के ई the whole upon k. Answer will remain same. अलग लिखो या साथ लिखो, it doesn't matter. Answer will remain same. Clear everyone? अच्छा, वॉल्टर के भी कुछ अजम्पशन है. अजम्पशन नंबर 1, सी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे मैंने D1, D2, D3, D इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ D लिखा है. मीन्स डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज व्हाट वॉल्टर हैज अज्यूम्ड. डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. फिर सिर्फ ई लिखा है. ई मीन्स अर्निंग्स. E1, E2, E3, E4, E5, ई इनफाइनाइट ऐसा नहीं लिखा है. E100 नहीं लिखा है, सिर्फ ई लिखा है. तो कहना है इसे अर्निंग्स रिमेन कांस्टेंट. अच्छा, यहाँ पे के फॉर ईयर 1, ROI फॉर ईयर 1 ऐसा नहीं लिखा है. ROI फॉर ईयर 2, के फॉर ईयर 2 ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ ROI और के लिखा है. So it means ROI and KE also remains constant. These are some. See, ये सब है ना, models are theory based. So theory is always backed with certain assumptions. Assumptions के बिना कोई भी theory नहीं बनती. Clear? So इस Walters model के भी कुछ assumption है. Assumption is D remains constant, earnings remains constant, ROI remains constant, KE remains constant. ठीक है? Everyone clear till here? Any doubts? Any concerns? So now let's take some illustration and understand the ultimate point, the ultimate conclusion that Walter has drawn. ठीक है. वॉल्टर ने क्या बोला? अगर डिविडेंड चेंज होता है, डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी चेंजेस, या डिविडेंड पे आउट ऑफ द कंपनी चेंजेस, प्राइस शुड चेंज. ठीक है. दिस इज व्हाट Walter has said. Yes or no? Okay. This is what Walter has said. So let's take an illustration and see actual में market price में affect हो रहा है कि नहीं. So let's check. Walter's model on page number 'can you see over here dividend discount model technique? So it is nothing but sum of all future cash inflows discounted at KE. ठीक है. फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में 3 सब मॉडल. जीरो ग्रोथ मीन्स कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ मीन्स गॉर्डन्स मॉडल, वेरिएबल ग्रोथ मीन्स इन आर टर्म इट वाज वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मॉडल. ठीक है. तो जीरो ग्रोथ में देखो, दे हैव डायरेक्टली गिवन यू फॉर्मूला डी अपॉन के. उन्होंने यहाँ पे सम टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेरिवेशन नहीं लिखा है, बिकॉज इवन इंस्टीट्यूट नोस कि वो हमारे काम का नहीं है. It is a task of mathematician. Walter's model कहाँ मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ, Walter's model I found now finally. Can you see the formula? D plus E minus D. हाँ, हमने ROI into K बाद में लिखा है, उन्होंने आगे लिखा है. फर्स्ट फर्क उतना है, but formula is same. Clear? So now let's try and solve. Illustration number अच्छा, इलस्ट्रेशन मैं खुद का बना रहा हूं. इलस्ट्रेशन आई एम मिक्सिंग अप दिस इलस्ट्रेशन
with my version, so that better understanding I with some twist. Huh? So let's say company earns rupees 10 per share. Can I say earnings per share? Yani ki E is rupees 10. Earns means earnings. The capitalization rate and ROI are 10% and 12%. Capitalization rate means equity capitalization rate, which is 10% and ROI is 12%. Okay. Now let's take different scenarios. Okay. Let's take scenario one. Scenario one. Assuming company does not pay any dividend, means my dividend payout ratio from earnings is zero. Okay. Calculate price per zero. Sorry, P0 as per Walter. This is the whole question. So सबसे पहले तो मैं वॉल्टर की फॉर्मूला लिखूंगा. ऑलवेज स्टेप वन, जो भी मॉडल पूछा हो, राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला के बिना डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने का. फॉर्मूला यू शुड राइट. कैन आई से इट इज डी अपॉन के ई प्लस ई माइनस डी आर वाई अपॉन के ई द होल अपॉन के ई. ठीक है. नाउ जस्ट फोकस ऑन सिनेरियो वन. Scenario one is when we pay no zero dividend, 0% dividend from the earnings. So can I say first scenario is indirectly saying you D is zero dividend. मतलब जितना earnings कमाया वो सारा retain कर दिया, dividend कुछ भी नहीं भरा. So if we substitute in the formula, P0 will be 0 upon KE plus earnings is 10, dividend is 0, ROI is 12%, KE is 10%, the whole upon K. K is 10, means 0.10. So can you calculate this? This will be 0 plus 10 into plus 10 into 0.12 divided by 0.1 divided by 0.1. ये 1.2 नहीं 120 आ रहा है. 10 into 0.2 divided by 0.1. ठीक है. The whole divided by 0.1. So answer is coming to P0 as rupees 120. ये सॉल्व तो सबका आ रहा है ना ये. Yes. Clear. So scenario one, when dividend payout was 0%, worth of the share, price of the share is 120 rupees. ठीक है. Now let's move to scenario two. बोलो scenario two में मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लूं, आप बताओ, वो रेट लेता हूं. फर्स्ट केस में 0% लिया, सेकेंड केस में कितना 20%. ओके, लेट्स टेक 20% व्हेन पे आउट इज 20%. सो कैन आई से नाउ माय देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ डी. ठीक है. सो डी विल बी 10 रुपीज इज अर्निंग्स, उसमें 20% इज पेड एज डिविडेंड, ₹2. क्लियर. So can I now calculate revised P0 when payout is 20%? 2 plus 10 minus 2, correct? E minus D, 2. ROI पॉइंट कितना था, ROI कितना लिया था, मैं भूल जाता हूं. 0.12, 12% लिया था. KE was 10%, the whole divided by 0.10, 0.10. ठीक है. सो इस केस में P0 कितना आया, 2 divided by 0.10, 28 into 0.12 divided by 0.10, the whole divided by 0.10 plus 20. 116, everyone. What this answer? So can you see when dividend payout ratio changes from 0 to 20, price of the share changes 120 to 116. So can I say effectively wealth of the shareholders will change? So dividend decision of the company
the payout ratio of the company does affect the market price. This is what Walter is trying to say. Scenario 3. Let me take at 80%. Scenario 3. Oh, sorry. क्या लिख रहा हूं मैं? Scenario 3. Scenario 3. When dividend payout ratio is 80%. So can I say D in this case will be 10 ka 80%. 8 rupees. So P0 will be 8 divided by 0.10 plus 10 minus 8 into 0.2 divided by 0.1 the whole upon 0.1. So इस केस में P0 कितना आएगा? एट्टी plus 2 into 0.12 104. Okay, 104. See again, I changed the payout ratio of dividend. Means dividend decision change किया मैंने 20 से 80% कर दिया. So it is affecting market price is changing. Clear everyone? Last scenario, scenario 4. Let's take 100%. Scenario 4. When payout ratio is 100%, मतलब जितना कमाया सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, रिजर्व्स कुछ भी नहीं रख रहा हूं. ठीक है. सो यहाँ इन केस कैन आई से एक्सेस जो रिजर्व से मिलने वाला था वो कुछ भी नहीं मिलेगा. सो डी विल बी 10 into 100%, which comes to rupees 10. So P0 will be divided by 0.10 plus 10 minus 10. ये जीरो ही हो गया डायरेक्ट. सो ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट स्टिल आई एम मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी. सो कैन आई से 100 plus 0. P0 comes to 100. ठीक है. सो if I conclude all the 4 scenarios, scenario 1 was, see, let's say this is payout ratio and the resultant price. Payout ratio जब 0% था, can I say my P0 was 120? फिर हमने I guess 20% लिया. Scenario 2 was 20%. 20% पे प्राइस आया था 116. Scenario 3 पे आउट 80%, उसमें प्राइस हो गया 104. Scenario 4 100% पे आउट, price हो गया 100. So can you see when dividend decisions of the company are changing, when you are changing the policy payout ratio, it is affecting the market price. Did you understand? Acha, in this case, can I say wealth of the shareholder is maximum when price is 120 rupees? The higher the market price, higher the wealth of the shareholder. So in our present example, the best payout ratio is payout ratio of 0%. Following, when payout ratio was 0%, means जब कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था, तब मार्केट प्राइस इज मैक्सिमम. मार्केट प्राइस इज मैक्सिमम मीन्स वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इज मैक्सिमम. जितना ज्यादा मार्केट प्राइस उतना ज्यादा वेल्थ. फ्रॉम 4 इट्स चेंजिंग मीन्स यहाँ पे कहा 4 है, यहाँ पे तो 12 है. ठीक है. अंडरस्टूड टिल ईयर. अच्छा, अब ये 0% ही क्यों आएगा हमेशा? दिस ऑल्सो वी विल लर्न इन नेक्स्ट एपिसोड. Yes, price is changing. Yes. But now I want you all to twist this same example
Same illustration, huh? Earnings is 10. Scenario 1. Scenario 1, you take payout ratio of 0%. Scenario 2, you take payout ratio of, this is not P0, ये payout ratio है, dividend payout ratio. Don't get confused with P0. वो हमें calculate करना है. Same scenarios, 4. Payout ratio 80%, payout ratio 100%. ठीक है, ये 4 scenario. The twist is, now let's take KE as 12% and ROI as 10%. First case में उल्टा था, ROI was 10%. Sorry, ROI was 12%, KE was 10%. अब स्वैप कर दिया, ROI को 10% पकड़ लो, KE को 12% पकड़ लो, ठीक है. Just calculate P0 as per Walter's model and tell me the price. ठीक है, आप कैलसी पे करो खुद से. You took the screenshot of illustration, ना? Take the screenshot of illustration and right now only, during the lecture only, you give me the P0 in 4 such scenarios. ठीक है, payout ratio and P0. ठीक है, this is payout ratio. 0%, 20%, 80%, 100%. अब मुझे आप प्राइस बताते जाना 1 by 1. बोलो, when 0% is dividend, how much is P0 coming? 83.33. अच्छा, ओके ओके, आई थॉट 0.83. 83.33. ये 69.44 आ रहा है सबका. सो स्टूडेंट हु गेव 89.33, you need to check your calculation. 69.44. Okay. When payout ratio is 20%, you can just solve it on calcium. अभी don't write in the notebook. वो घर पे जाके as a homework लिखना. Just calculate on the calcium and tell me what is price. No need to write the solution right now. बोलो, at 0%, 72.22. इतना for 80%. खुशी, is this for 20% की 80%? हाँ, अमर 72.22. अच्छा, 80.56 is for 80%. Okay. Okay, 80.55. Correct, Gayatri. हंड्रेड परसेंट में 83.33 is for 100%. Okay, 83.33. So can I say when we swapped the ROI and KE का percentage, now see again, payout ratio changing, price changing, result 1. But इसमें से which is the best payout ratio for the company? Can I say the best payout ratio is that payout which generates maximum price? So maximum price is coming when payout ratio is 100%. Understood everyone? First case में ऊपर क्या आ रहा था, when payout ratio was 0%, उसमें that was the best price.
अंडरस्टैंडिंग? सो अगर अब एमएम का कंक्लूजन ड्रॉ करना हो, कैन आई से फर्स्ट केस वॉज ROI 12%, KE 10%, correct? So when ROI is greater than KE, the best diet for the distribution of dividend is 0%. Always, in all the cases. This is what Walter is trying to say. जब ROI KE से ज्यादा है, आपका बेस्ट डाइट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड पॉलिसी के लिए बेस्ट डाइट इज 0%. But on the contrary, when KE is greater than ROI, best diet for the company is pay entire earnings as dividend. Are you following? This is the conclusion of Walter's model. अगर ROI KE से ज्यादा है, 0% is the best diet for dividend policy. अगर KE ROI से ज्यादा है, बेस्ट डाइट फॉर डिविडेंड पॉलिसी, बेस्ट डाइट फॉर द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड पॉलिसीज 100%. हमेशा ऐसे ही होगा. अब ऐसा क्यों होगा, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिविडेंड डिसीजन. क्लियर? बट कंक्लूजन क्या निकला वो क्लियर हो गया. ऐसा कंक्लूजन क्यों आएगा, उसका लॉजिक वी विल अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ FM सीरीज. Okay, so students, I hope again today's session did some value addition in your chartered accountancy life, and I hope you enjoyed, you understood today's session. I'm stopping the screen share. Tech team, we can end today's session. Thank you all. Yes, thank you. Recording stopped.